ही कोई ऐसा पोर्टफोलियो हो जो सर ने हैंडल ना किया हो। तो यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सर से अछूती रही हो, चाहे वो टॉप टू बॉटम। तो किसी भी तरह की फंक्शनिंग ऐसे नहीं है जो सर के परव्यू में ना आता हो। तो सर को बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, और हमने चाहा कि सर के एक्सपर्टाइज को थोड़ा और यूटिलाइज किया जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि एक ऑफिस प्रोसीजर जो और मैनेजमेंट है, जानते सारे हैं, काम हम लोग करते ही हैं, लेकिन एक प्रोसीजरल वे में या एक उसमें किस तरह से अपनी चीजों को या इनपुट को हम दे सकें, जिससे कि थोड़ा और जो स्पीकिंग ऑर्डर बन सके या स्पीकिंग नोट बन सके। नहीं तो लिखने को तो बस जनरली हमने देखा कि प्लेस बिलो लेटर या उससे हम 2-3 लाइनें हमारी रटी रटाई होती हैं और हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सर की इसी एक्सपर्टाइज से जो हमें वैल्यूएबल्स इनपुट मिलेंगे, और इसीलिए हमने सर को दोबारा याद किया और सर एग्री हुए। सर थैंक यू फॉर दैट। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सेशन को स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर। Namaskar, all the participants present online and my colleagues who are present here today. थोड़ा कैमरा को टेढ़ा हो रखा है। हाँ ठीक है। एक्चुअली आज का जो सेशन है वो सेशन कुछ इस तरह है कि ऑफिस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट नाम दिया है इसका। द नोमेनक्लेचर may not describe the entire thing, but it gives you a fair understanding of how we look at our office processes. आप थोड़ा कैमरा को ना ऊपर कर दीजिएगा, नीचे वाला हिस्सा काफी ज्यादा दिख रहा है। हाँ, that's better, that's better. Yeah, sure. So basically मैं ये बात करना चाह रहा था आप सबसे, in fact to all of you, is something which we talk about less in official parlance, but more on personal parlance in office. That is how we conduct ourselves in office. Our conduct as officers, our conduct as dealing assistants in various capacities, to be very honest. Before that, I'll just tell you a short story which I have oft quoted actually. If you have attended, is there anyone who has attended my earlier sessions? I don't think so. Maybe one or two. Okay, fine. So this is, I say, this is a example which talks about flexibility in administration. It is called a Cholutaka example. Basically, Cholutaka is a river. This river is in Honduras, which is a Central American country. And what happened, this particular river is affected by hurricane storm every year. So what happened, that there is a bridge on that particular river, and every year the bridge gets destroyed. And this phenomenon was happening from around 1900, early 1920s to almost till the year 2000, 1995, 96. So one government came into power in that country, and they decided that every year the hurricane storm comes and it destroys the bridge which is over the river Choluteca. And the entire communication system, the entire country, comes into a kind of a topsy-turvy situation. So why not make a bridge which is very durable and which will withstand any amount of natural calamity of whatever sort, and it will be robust enough. So they consulted international experts, and a bridge was made. It was in the year 1995-96. Now, after 4-5 years, everything was going fine. After the bridge was constructed, a hurricane struck the country, and in a very bad way. Almost 3 days, historic, almost 75 centimeters of rain, and the country was drowned, and everything wrong that could have happened had happened. Then what happened after 3-4 days, when everything subsided and people came out of their homes, and they could see that the river has changed its course. Now it is no longer flowing below that bridge, which was made after spending so much of money, so much of effort. It is no more there under the bridge. It is flowing somewhere another half a kilometer away from the bridge. There was some landslide and whatever it is.
Now, they again extended the bridge and did everything. It took some time, but everything was put in order. The moral of the story is, it is not that whatever processes and procedures we follow, there is always a scope of improvement. So we must keep that window open. That window open physically as well as in our minds. The biggest problem in administration I find is the stereotype and mental block, which we oft say in Hindi, पीछे देखिए और आगे चलिए. मतलब पीछे के फाइल को देखते जाइए और आगे अपना काम बढ़ाते जाइए, ताकि nobody can say anything. क्यों? पहले से वो काम हो रहा था, मैंने उसको आगे किया, अपने से तो मैंने कुछ किया नहीं. तो ये जो adaptability है, this example gives you a classic example of adaptability, how adaptable we are in a given circumstances. मेरे सामने सुबह whatever, I'll be little bilingual if you don't mind. I can be in any other, I can be 100% English also, but I think bilingual is okay with all the participants. Yes, sir. Yes, sir. Yes, so nice. I think that gives a little. Otherwise, I can be in English only, but that will be a little. So what happens is that when we approach administration, this is very important. My 2.5 decades of remaining in administration, various capacities, in various organizations also give me a fair understanding that, and it is not 2.5 decades experience. I think I'll be telling something wrong. In fact, very early days in my administration, I had started believing that these things are there, but obviously I was so junior that if I say that at that point of time, then somebody might say my senior is a dereliction to duty, or he's trying to shirk his responsibility. So obviously, there is a time at which you are in a position to share your experience. So it is more of a sharing my experience, and I'll be very happy that if you people share also during this session. I don't want to be a one-way traffic. I have seen your profile today, and all of you are very senior officers, senior organization, and must have been running the organization in a fantastic manner, to be very honest with you. So any training session, I don't know how much of the human resource value it going to add, but what best it can done is that after we discuss things together, we share our experiences, we do get enriched by that. I think my colleagues here sitting also will agree with me that जब हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरों की समझ को समझते हैं, खुद के समझ को बताते हैं, तो समय के साथ साथ हमें उसका भी अनुभव होता रहता है कि what we are doing, what others are doing, and how best it can be assimilated. So under these circumstances, it is a kind of a situation where I personally feel that we should look at administration with a little innovation. National education policy talks about innovation in education, practical orientation in education, and involvement and multilingualism and so many things. So believe me, I think we need to also apply innovation in administration. I think that the time has come for that. I'll come during my discussion to some of these issues one by one, very, very cursorily, but I think that would be of some importance actually. So while we talk about things, I was just thinking, what are the 3, 4, 5 things I'd like to see as a professional approach in administration? So according to my understanding, it is attitude. I put attitude as the most important attribute of an officer. By officer, I mean not only the so-called officers of Group A or Group B, but officer is every employee. I mean that as a general expression. So I include everybody. And if you go to the official books also, every person who is working in the organization can be said an officer. There's no problem. Now the question is that why I talk about attitude. In Hindi में इसको कहते हैं रवैया. मतलब how you approach certain things, how you approach some problem. Giving a small example, I think most of you will be watching cricket, and these days Champions Trophy is going on, but I'm not going to come to this Champions Trophy. I'm going to little far back, in 2011, when India was playing Sri Lanka in World Cup final in 2011 in Mumbai. And you will see that India had to chase a target of around 270 odd runs in a World Cup final, which was almost unheard of before, and nobody has chased such a run and won the tournament, even in home ground. So odds are really against that. And in that particular set of things, you will see
or the then captain Mahendra Singh Dhoni, he was not in the best of the forms in the entire tournament with his bat. You can go back and see the statistics. He was fantastic. Otherwise, he's one of the greatest captains of all times in the history of cricket. But he was not in that good a touch. But what happens? Yuvraj Singh, who was later, given the trophy of the man of the series, man of the tournament, he had to come after fall of a particular wicket. But what happened? MS Dhoni decided to come before Yuvraj Singh and take the challenge head on. And all of us know that innings, which will be etched in our memory always throughout our life, an innings of a lifetime, and he really steered the team towards victory. Everybody contributed, but that particular innings and that particular decision of the captain, he's a captain of the team. And later on, I have not read anywhere, but I have actually heard from somebody in an interview. He said that a question was asked, why you changed the batting order? Why you came early? He said, I decided that if today I don't perform and show set an example, then when do I do it actually? Aaj agar nahi khela to maine kab khela? So that attitude in administration is required. Whenever a piece of paper will come, if it is a very routine matter, fair enough. If there is something plus and minus 10%, everyone will start to dhakka maro that document to some other person, to some other person. One officer will mark it to another one to third one. It will keep moving round and round and round, and no decision being taken. It requires that little attitude actually. Okay, this is my work. Let me see what is there in it. How best I can add some value to this particular document. That particular paper under consideration, we say PUC, when you talk about fine. So attitude, according to me, is a very, very important aspect of administration and also in our life. These are also our life lessons, because I find that office is very much integral part of our life, because I think 1/3 to half of the day we actually spend in office, we take in a metropolitan city. Traveling time also, I think it's half a day. So I think we spend more time in office and office related work than at our home, but for the weekends. So I think we are really giving a lot of time. Let that time be utilized in the best possible manner. So this is, I think, one thing which is of paramount importance, that is attitude towards work. It applies to everybody at all levels. It applies to the senior most, it applies to the junior most. How much attitude I'm having to approach a particular issue, which is before me. Another issue I find, that is initiative. How much initiative I take in a particular matter. Koi bhi kaam mere samne aaya and I am ready with a justification that this work does not belong to me. It is not belonging to me. Some other person will do it. ये कहावत है, हिंदी में बता रहा हूं, मैं भी किसी प्रोग्राम में सुना था कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला. तो ये जो अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए. खुद का काम, जो जिम्मेदारी है हमारा, वो हम पूरा करें. एंड बिलीव मी, अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा सोचते हैं, तो जितने लोग हमारे पास, हम कई बार हम बोलते हैं हमारा सेक्शन, हमारे ऑफिस अंडर स्टाफ्ड है. मुझे लगता है अगर हम सब लोग 8 घंटे का ऑफिस टाइम है, आई थिंक सभी का, 8 घंटे में अगर 6 घंटा भी काम कर ले और मन लगा के करे, तो समय इतना बच जाएगा कि लगेगा आधा दिन तो काम ही नहीं है. बट हम लोग क्या करते हैं कि समय को थोड़ा सा एक्सटेंड करके 1 मिनट की चीज को 10 मिनट में करना. तो ये एटीट्यूड एंड इनिशिएटिव, दीज टू आर अकॉर्डिंग टू मी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट attributes. The third I will come, मैं इसको शुरू में भी बोल सकता था, that is punctuality. Now punctuality is also a very very important attribute. समय से ऑफिस आना और समय पे ऑफिस पे जाना, ये इसलिए जरूरी है to maintain time, because when we are disciplined in our office timing, we are also delivering that much, because time is also having a variable. So if I am in office for 6 hours and then half of the time I think that मुझे करना क्या है, और आधा समय मैं
लोगों से बातचीत करने में लगा दूं, दिन तो पूरा हो गया मेरा, माई वर्क इज कंप्लीट। सो ये अप्रोच हमें चेंज करना चाहिए। और ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, मुझे लगता है आप भी अपने ऑफिसेस में अपने स्टाफ को भी बोलते होंगे, जरूर बोलते होंगे, आई थिंक। बट मुझे लगता है कि इस टाइम has come that we must, every minute we spend in a public institution or a private institution, wherever you are, I think all of you are in a public institution, in some university, in higher education institution or somewhere, I think every minute should count. जैसे एक टीचर 45 मिनट्स के क्लास लेते हैं, वो लेट आते हैं तो लोग कहते थे कि 45 मिनट्स में 10 मिनट तो टीचर लेट आए, 35 मिनट्स में क्या पढ़ाएंगे। सिमिलरली 8 घंटे का हमारा दिन है, 8 घंटे में मैंने कितना समय दिया और कितना काम किया वो इंपॉर्टेंट है। Sum total of the entire activity of the staff and officers are the actually output of the organization in totality. So we should look into that aspect in a little important way. Now I'm coming to, these are the 2-3 things which I thought I must share with all of you. These are actually also part of officer-like qualities. Again, by officer, I mean everybody. Even by officer, I mean a lower division clerk, an office assistant, a senior assistant, a section officer, under secretary, deputy secretary, assistant registrar, whatever designations you can give, no problem. Everything adds up. So all of us must show these attributes in our functioning. Now coming to a few important aspects. We talk about file. I'll ask my people here sitting here, maybe if you want to respond also. We talk about file. Now what is a file? In office, throughout the day, we are talking about a file. ये फाइल नहीं मिल रहा, वो फाइल में पुट अप करो. व्हाट इज अ फाइल? डू यू रियली नो व्हाट इज अ फाइल? एक गत्ते में 4 नोट शीट लगाना, उसको बंद करना, एक फाइल कवर लगा देना किसी तरीके से. इज इट अ फाइल? नो, इट इज नॉट अ फाइल. सो मे वी जस्ट ponder over this point. What is a file? Anyone can respond, no problem. I want it to be an interactive session, although I've been speaking for last almost 25 minutes anyways. Would anyone like to say anything? What is a file? आप में से कोई? Proper documentation of a case, maybe a set of documents and correspondence in a particular case. Okay. Right, in a proper way. Okay, good. Initial to current. Okay. That's great. Anyone? उसका म्यूट कर, एक मिनट के लिए म्यूट कर. So whenever we receive any paper which has to be worked upon, which we say PUC in other sense, so to compile the documents, the note sheets, the orders, we need a file. So categorization of documents, safeguarding of documents, processing of documents can only be done when we file them. Okay. So file can be of various types. Guard files are there where we keep safeguarding of the papers which we have already processed. But whenever a new topic comes up for the consideration, so we need a file to move that. Okay. And of course, the written statements and the rule positions quoted to be, processed in some way. So that is a filing system. Okay. In my opinion. Okay. Let me add. Fantastic, very nice. डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया से बताया, बहुत बढ़िया से, रियली बहुत बढ़िया. मैं जस्ट उसमें थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी जोड़ देता हूं. जो फाइल की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि there is a note portion, Yes. there is a correspondence portion, and there is an appendix to the note, and there are appendix to the correspondences. These 4 elements makes up a file. Definitely. And definitely on a particular subject matter, not a particular problem, but a subject matter. And when we talk about a file, we do talk about file management. Now, as far as file management is concerned, आप लोग इस तरफ आ जाइए ना प्लीज. बिल्कुल आप आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल बैठिए, आइए सब लोग आइए.
बिल्कुल आ जाइए, कोई issue नहीं. Now the question is that फाइल मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये बात आती है, आपने अभी बताया है गार्ड फाइल मेंटेन करना. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. I give my personal experience to you. When I joined my service first, almost 26 years back, in an office, in a government office, what happened that I was hardly 3 months old in the system after my professional training, and then I joined and I was reporting to an undersecretary. And I went to his room, and two officers were sharing in the ministry, sitting together. So I see the officer beside him is very annoyed and anxious also, and scolding his junior on some document which is of 1952, and talking about 1997 or whatever. So document is not traceable and is very important. It is actually, it's an office order actually. They need it. On some court matter, it has to be produced. Now I overhear the conversation, to be very honest. And I talked to my undersecretary and come to my office and asked my section staff. He just tried to find out that number. I just take that number out. That what is that number? In a small yellow slip. Just see our guard file. They go back in time till 1976, they go. After that, they leave it. I said, no, let me come. Where the guard files are. Believe me, it's a real-time example I'm giving. It took around 10 o'clock to 3 o'clock in the evening. And we could locate that particular office order in a very dilapidated condition. Almost कागज जो है वो मुड़मुड़ा हो गया था. But बहुत ही cyclo-styled document, but still readable. उन दिनों मोबाइल नहीं था कि फट से फोटो खींच लें. आज से करीब 30 साल पुरानी बात है. And I took it to that deputy secretary. He was absolutely, speechless. Where from you got it? I said, from my office, guard file. Because one copy was marked there. Because the subject matter on which it was dealt, in 3 months experience, I could know that one copy must have been marked to my office also. It was given to them. Eventually, we won the case. And that day, 3 months old in the system, people started knowing me just by this conduct. Just finding an office order in a 40-year-old file. So how important guard file is? All our sections must maintain a guard file of the circulars and the office orders and any important communication that we are sending. It does mention guard file, but most of the times it happens, it does not go to the guard file. It remains in some other file and after that gets vanished. So guard file is this important. It is actually holding the institutional memory. Now coming to part file. Part file is done for two purposes as I understood. One is that a bigger issue is being dealt in the main file. So you are sending part files because it cannot wait. The other issues cannot wait. They have to be deliberated parallelly, and their deliberation does not require the main file. You use part file. Another, to have correct practices. In the part file, you are not showing the main file to the competent authority. So you are saying something which is not being vetted by the competent authority or by any other person. It is taken in the face value because the main file is under submission. And in a big organization, thousands of files goes to the senior officers, so they may just sign it and approve the matter in good faith. So that is correct practice. I'm keeping it aside for the time being because let us concentrate on the right kind of things actually. So in that aspect, when we talk about part files. And the moment you create a part file, you must give a number. Part file 1, even if it is 1, still say part file 1. Give it part file 2, part file 3, and immediately after the main file is returned, the first responsibility of the concerned dealing assistant is merge all the part files immediately. Here the immediately means if one day you receive it, the next day you must merge it. No keeping it away. Because the moment you keep it aside, after some time you tend to forget because the importance of the issue may have died down
कुछ और काम आ गया होगा सामने, तो हम भूल चुके होंगे, we might have forgotten that what was there in 2 days back. It happens, genuinely it happens with all of us. So we must understand that we must look at the the part file in a very serious manner. And I've seen that part file, even in personal files also, there are 2-3 cases moving and suddenly files come back, and when after superannuation के समय पे सर्विस काउंट करने जा रहे हैं तो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक पार्ट फाइल नहीं मिल रही है, उसमें कुछ रेमिटेंस आया होगा, वो याद नहीं आ रहा है किसी को. So that kind of situation also may arise. So I think we must maintain that. Similarly, the leave record, especially the earned leave, is a related issue. It's purely establishment matter, but still I'm highlighting here. Why it is important? Because if leave record is not maintained, EOL, EL, whatever, then at the end of the day, when you go for the leave encashment, then you check out and you find out that every time 15 days leave has been credited, half of the time it has not been credited. Some drilling assistant has changed, new person has come, forgot to add them, they move another direction. Nobody knows. It's almost looking London talking Tokyo. So maintenance of service book also requires proper maintenance of leave records at the same time. Service book maintain kariye, personal file maintain kariye, as well as the leave record maintain kariye. These three should be done, and it should be inspected by the concerned person regularly, so that his or her records are kept straight, especially the service book. That's important. Now we talk about the file. Let me talk about, since Dr. Saab, you have talked about this, in your organizations, do you have a file numbering system? Wherever you are working, a viable, an authentic file numbering system you are having? I'm asking this question to all the participants who are online. Yes, sir. We are maintaining file index, sir. You maintain file index. Okay, yes. Fine. That's very good. That's very good. Let me just share with you a small model. I'll take just 2-3 minutes, 5 minutes time, which we follow here. Just as a matter of reference, you may have a better system, to be very honest, but we maintain a system. I think as the time that I share with our people also, our people already knows about it. But let me share it. In our system, what happens when we number files, it is done in a manner where the section, sections of the memory of an organization. It is a section which keeps all the documents, all the records. So it is the memory of a section. So name of the section is very important, where from the file got originated. That is one. First attribute is the section. And obviously, if it is the establishment one section, let us write estab one. So we have given a codification of all our faculty, departments, centers, offices, sections, colleges, hostels. Every entity has been given a small 5-letter code or something like that. And this is followed by the subject matter of the file. Give an example. Suppose teaching employees are getting appointed in the university, and the code for the opening of the file of a teaching employee is 01. So any employment is done in teaching category, the code number of the file has to start with 01. This is a code for all files. Suppose 50 appointments have been done. So, and suppose establishment one section is doing that appointment. So it is estab 1/01. That means it is the code of 01 for the personal files of teaching category. For the non-teaching, it may be 02. Maybe some purchase of refrigerator, it is 75. So what happens, we have actually categorized in, and I think almost close to 400 such heads have been identified. And we keep adding to that also. A document has also been created, which has been written by me only, to be very honest, almost 1.5 decades back. This is called a file management system document, which was widely circulated across the university system for its implementation, including its colleges and every entity. It was circulated by the university in an official capacity. And I did have a long conversation on that with our stakeholders, because it was introduced quite on. There was a system of file numbering before that also, but we shifted to this almost I think 2012-13 I'm talking about. This kind of system is there. Now what happens in that? The third attribute is what? It is the year on which the file is opened. File means file, register, OCR, whatever. The year you are giving, in which year it is opening. And the fourth attribute is
the number of that particular file in that particular year file register. Every section or office where a new file is started has to have a register maintained on a yearly basis. How many new files have been opened? So in that register, whatever serial number is coming, that is the fourth attribute. So code of the section or the office, then the particular code of the subject matter, then the year of its opening, and the serial number of that particular file in that file register of that particular year. So 4 attributes will define a particular file or a register. And the 5th attribute is optional. If any other attribute any department or section wants to give, they may give. But these 4 has to be there. Otherwise, what happens without a number when a file moves? Somebody will say the file is not getting traceable, an important file. Somebody will say it is a blue colored file. Somebody will say no, bluish gray. Somebody will say no, it is gray actually. So we will only think about the colors and forget about anything else. So numbering of the file is very important. It has some very important advantages also. What is the advantage? You make uniform decisions. Otherwise, what happens? You have no file numbering system and credible file numbering system I'm talking about. Suppose every time a document comes and you start a new file, that is not file numbering. Believe me, you have to find that particular subject matter where the similar matter has been deliberated and take it to that particular file. That is called proper file management. And what happens in that case, when you are submitting that particular file, you know what kind of decision has been taken on a previous matter, on a similar matter. Otherwise, every time a new matter you submit to the competent authority, you give your own opinion. And suppose the authority has changed and also the billing assistant has changed and the chain of officers have changed, maybe a separate set of decisions are being taken on a similar matter. So there is a possibility of that. So similarity of decision making, duplication of effort. Suppose somebody is making applications after every few days and it has been decided to file the application, no action should be taken. Now you have no single file, you don't even know. A new person comes and starts examining the old issue once again. Suppose in a particular matter, it has been decided to apply certain rules. If a proper file is not there, you will be applying different rules at different points of time, according to your interpretation. And the last but not the least, as we all know that the record management system has a very important aspect that is called weeding out of the records, because no institution, even the apex court of the country has also observed this on various cases. And one of the cases was disclosure of evaluated answer script, Aditya Bandyopadhyay versus Union of India. In that also it was said the record retention schedule has to be robust. And every institution has the right to have a record retention schedule and the document should be kept till the time it is required to be kept. Otherwise, every document kept for the entire period of time, then there will be space crunch. I give a very small example on that also. There was an office in which the super boss used to say that no files should be weeded out. We may need it at any point of time. A very small space was there and employees were finding it difficult to keep them. So what they did actually, when the number of files and the registers increased, they just took out the tables. They said, okay, fine, let us put the files only on which we work on some plain sheet, then we will work because there is no space. I'm giving a hypothetical example maybe. And then after that, space is not there. So people say, what is to be done? Then the personal assistant of that officer says that, sir, I think we need to weed out the files. He said, yeah, it's very dangerous. We must weed out the files. So what happens that one fine morning, they say, okay, fine, now let us weed out the files. So we have mechanism is ready. So we are going to weed out. The officer tells his PA that, okay, fine, weed out the files. He just goes and he asks me to come back. He says, what happened? Before weeding out, ensure that one copy is kept, so that if we require it later, we may refer to. Then where are you weeding out the file? So weeding out has to be complete and weeding out has to be conclusive also. It is not that I keep a copy and then weed out the document. In that context, I must tell you one thing. In Right to Information Act, when information is sought, very clever officers actually, if they do not want to disclose the information, they will use this channel. Many of them asked me for advice also. I've been looking after RTA for quite some time, but anyways. So what happens, what they ask, sir, some information has been sought. So, sir, as per record retention schedule, that information has to be kept for 5 years. Now it is almost 10 years. So I'll write that the information record as per record retention schedule information is not available. Then I ask that person that you have that information. But yes, sir, I have it. But no problem if you say we will get it off now.
because 5 साल तो हो गया है. Believe me, this is absolutely illegal. This is actually destruction of records. After you see an RTA application, you don't want to disclose that information. It is in your records. Now, after seeing the application, you are destroying the records because it has the record retention schedule says that the time is over for that file. No. If you have a record, it has not been weeded out, it is available in the physical form or whatever form, then you have to give that information. Why I say that? Because I've heard this from many people in last 20 years or 18 years. I've been looking into this RTA thing. So this is one very important thing. The record retention schedule is required for every document. So that how many years you will keep that document, how many years you are going to keep that particular document. After that, it has to go for weeding out so that new records can come. But certain records are permanent also. Suppose you have a stock register of things. You have to keep it. So something like that. There will be permanent records. There will be records with 5 years, 7 years, 10 years, whatever. After the time period is over, it is the responsibility of the section officer to just take a list. Again, at that point of time, the file opening register is important. From there, the file has to be identified and marked as 2R, 5R, or whatever it is. Then for this number of years, the file is getting recorded and send it to the record room. And after that particular exercise, time is over, you can weed out the file. And while weeding out, you have to keep a record of which numbered file has been weeded out. That number is important. A register has to be maintained. If this is the list of files, they have been weeded out on a particular date. It does not require a very big committee of very senior officers to deliberate upon. 2, 3, even very junior officers can do that because it's a mechanical exercise. But mechanical to an extent that before people who are doing that must understand that suppose a file has a 5-year record retention schedule and suddenly you see that file has developed certain importance, then you have to understand that file cannot be destroyed or weeded out. So that time period is also equally important. One has to understand. So that is what I was talking about, a little file thing, how you should do that and how record management has to be taken care of, because this is very important. If we don't do our record management, our file becomes untidy, our documents become untidy, it becomes very difficult to retrieve old documents. I think most of the government offices face this problem, although I have seen now in various offices, they use compactors, they use scanned files, the hard copy files are gone. So they will keep it in a particular manner so that easily the soft copy can be, recovered from the computer hard disk or something like that. So innovative mechanisms are there, but I'm talking about still, I think we are not 100% there. And again, going back to RTI Act Section 4, how meticulous you have to be in uploading information about your institution and the record management. As if you please refer to Section 4 of the RTI Act, which in itself is an RTI Act. If you just take it, the letter and spirit, the whole Section 4, if that is implemented correctly, then the law is implemented to a great extent, actually. So this is important of the file management system, and I think record management system and file management system, whatever we are talking about, is important for easy and systematic decision making in a particular matter. I know that many of the experts must have come and talked on various aspects of administration, pay fixation, vigilance matters, and so many maybe. But one thing is important, is the fulcrum on which the entire thing goes. Yeah. Yes. Any questions somebody is asking? No. Now, after this record management, I'm very briefly coming to RTI. RTI, not coming to RTI Act per se, but how to respond to questions in RTI. I've seen on many occasions, because why I'm talking about right to information, because it is an integral part of our administrative practices these days. And I think all officers, sections, and everybody is actually, at times thinking that how to give information, discussing it informally or formally at various levels. So I think this is important that we discuss it a little bit, that how we should be responding to RTI. First is that do respond to RTI as early as possible and definitely within 30 days.
of the receipt of the application. So this is very important. The moment you get an RTI application. So this is one point I must try to highlight, that within 30 days. Beyond 30 days, it goes, every information has to be given free of cost, and other penal provisions one may incur. And secondly, there is a misconception about the APIO. But I'm just talking about a few points, not all, because we had a discussion. Obviously, it was an interactive session. I really liked it on RTI, where all of you came out with a few questions, and I could answer them whatever best I could. APIO concept, many institutions think that the APIO is basically an assistant CPIO or the SPIO, and that person is supposed to assist that CPIO or the SPIO. But that is not the case. The job of the APIO is really very simple. APIO, if any institution is there, then you are getting 5 additional days in providing information. So as early as possible, not later than 30 days. So you get 5 more days. I'm just interpreting the section 7(1) of the RTI Act. So what happens that when we talk about this APIO, his responsibility is only to accept the application from the applicant, maybe online or offline, and forward it to the CPIO. So that is the only responsibility he's having. So let's be very clear about it. And another important issue is that when we provide information, many times we say that it's a third-party information. I'm only touching about very few things. Third-party information. Now, any information you are asking for, if you are saying it's a third-party information, then you are duty-bound to invoke the section 11 of the RTI Act. You have to consult, you have to seek an opinion or input from the third party, whether that information has to be provided or not. The third party may tell you that provide information or not provide information. But third party has no liability on your decision. So after even after the third party says don't disclose the information, and you disclose that information, third party cannot say why he disclosed the information. He can appeal definitely, for sure, but the decision finally is yours. So many CPIOs or the SPIOs take the route of section 8(1)J of the RTI Act, which talks about personal information and not third party. Many times I've seen officers talking about personal information, but saying it as third party information, and even writing also. I've seen on many occasions, so that is not correct. If you are deciding a matter and invoking section 8(1)J, which talks about personal information, don't say it is a third party information. Then you have to invoke section 11 and get the input of third party into records, and you have to keep the third party in all the appeal procedures also. Be it first appeal, be it second appeal, be it third appeal. Third appeal is basically not there. It is basically the writ petitions in the honorable courts, High Court or the Supreme Court. So that is not the thing. But the second appeal, I must say. So you have to understand that don't mention third party on every reply. And another important thing is that when you are actually seeking, somebody is seeking information from you on multiple points, many people say, I will count how many number of words that person has used, and whether that person is a citizen, that kind of hurdles people create. So I think one should be doing such things in a very sparable manner. It should not be a routine affair actually. Our intent in RTI has to provide information. The administration's intent should be provide information, and only not provide when the exemptions under section 8(1), any one of them, A to J, apply. But it cannot be said that our first purpose is not to provide information and find ways and means how we should not provide it. No, the intent is providing information. So please keep that in mind when you decide your matters under RTI Act, because I know that many times it happens that you don't want to disclose that information, and you find ways and means, how not to provide that information. So that should not be the actually, criteria. The criteria is providing information, because under section 4, as I was telling, if you are disclosing every information in the public domain, and why I'm saying that, in Delhi University, from 2009-10 onwards, we have been uploading the decisions of our statutory bodies on the website of the university. Many people said how it can be done. It is very difficult because there will be so many confidential matters, because the academic council, the executive council, the university court, everywhere confidential matters may also be discussed. What we did, we just taken section 10 of the Act, which talks about severance.
So we are not disclosing the personal nature of information in the public domain. Rest of the decisions of the university authorities, which are academic council, executive council, and the university court, is there in the public domain on the website of the university in a very systematic manner. Are you also doing it in your organizations? The minutes of the governing bodies or governing councils or your deciding bodies are on the website? Yes, sir. Yes, yes. You do that, right? Yes, yes. And you maintain a proper profile also, so that a person can really go and see. Our faculty members' profiles are available on the website. The academic profiles are there. So anybody wants to see the academic position of a faculty member, if they can go to the website and see. Our financial estimates are on the website for last almost close to 2 decades now. I think it was done in 2007, 2009-10, when I took over RTI actually in this organization as a CPI. This is the sample that they've sent, no? Are you also putting your financial estimates on the website? Dear participants? Sir, for Mizoram University, no. So you are not putting your financial estimates on Financial the website. estimates, yes, no. And none of the State Information Commission has never directed you to do so also, right? No, no. Okay, fine. But generally, if you go to the university website, University of Delhi website, you will find out our financial estimates are right on our website actually, and it is required actually under the transparency law that the financial estimates of an organization to be on the website. But that's the decision of your public authority. You are a separate public authority. You take your call for sure. But I think it's a good practice to do that because when finances are in the public domain, the apex body decisions are in the public domain. So you will understand in most of the cases, I think majority of the information you have put in the public domain. So the Section 4 requirement is actually addressed to a great extent actually. But anyways, I'll not get into this RTI discussion too far. A few quick points I said because there are certain misconceptions I find in my colleagues in various organizations. People do ask me for my advice also at times, very unofficial, but still. So I thought, I better, enlighten you about it. Maybe some of you get help out of it, or all of you know it probably. That is one way of looking at it. Should we go for a little this thing? Because it's 3:50. Online participant, now we will have the 10 minutes of all the online participant. Now we are going to resume the session. Okay, sir. सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर. Yeah. ये ले जैसा ऐसा है कि we were talking about administration, and I said that I will talk about a little, technology issues. Now you tell me that we always think that we will have a hard copy file, then we submit. Now time has changed. This is a time of the artificial intelligence. Think of a situation that you are finding it difficult to submit a note as a dealing assistant on a particular matter. And you have a smartphone and you open a AI application and give a few words to the application. And it comes up with a fantastically prepared note. And you submit the note. There may be a time which is coming very soon like that. A person has to do the list, only know what kind of command has to be given to that particular artificial intelligence large language module that will take care of the synthesize that particular LLM, it is said, that particular data, that particular command, and come out with a proper note. Suppose it happens, then there may be a time when actually a machine can do the work which we are doing after application of so much of our mind, following the rules and quoting it everywhere. When such AI systems are in place, maybe in a decade or maybe after that also, nobody knows, nobody has seen the future. So we should also think about those times. But presently, as far as our ICT application is concerned, as we are using Samarth portal in this university, which is through which we are actually infusing ICT in administration. Suppose a leave application, you can put
through that Samarth portal, if you did not send a note sheet for that or a pro forma, or your medical reimbursement bill, or your LTC reimbursement bill, or whatever your demands you are asking for any representation, you can put through Samarth portal, and it will be addressed by the administration accordingly. I don't know how many of you are having such kind of ICT infrastructure backup in your organization, but if it is there, it is fine. If it is not there, then I think we should also try to adopt it sooner than later, because it increases efficiency. You can do the same work with a little lesser manpower in a more efficient manner and in a more accurate manner. So that is also a very important way of looking at things. And this diary dispatch and every business, it is being automatically taken care of, because you need a diarist in the section to diarize all the DAC which is being received, the letters which are being issued. So one particular person is required. When you use such kind of an online mechanism, suppose that those numbers are given automatically, docket numbers in a particular document and through a program. So you don't need additional persons. So with a lesser manpower also, you can complete that work. So it helps us in some way. Suppose there is a crunch of manpower. So in the section, there are 5 people, work is of 6 people or 7 people. So, okay, one person is not there. So that will be taken care of, So these kind of things are also coming. ICT is coming it has already come in a big way, to be very honest. And I think many of the organizations are using it, and you must be also using it in your organization in some capacity or the other. But this is important thing. In fact, I must say that ICT also, our dealing assistants must use it. I have been telling it for quite some time to many organizations and many places in my lectures also. Every assistant must maintain an assistant diary. What happens is assistant diary is a very important document. What happens, suppose a DAC has been misplaced or something lost, some file has been lost, a part file has been lost. At least the FR, that is the fresh receipt or the paper under consideration, if it is recorded somewhere, this day it came, this is the subject matter of the thing, at least you can try to locate that. That particular number will be there of that particular letter. So every assistant means a lower division clerk or a junior assistant or an assistant or a senior assistant, upper division clerk, anybody, designations doesn't matter. The dealing assistant, so-called, should maintain an assistant diary. That assistant diary can be maintained in a physical form or in the computer on which that person is working. Because in that you can put a reminder also. Suppose some matter has to be submitted within 2 days, you can put that kind of checks also. 2 days, these files are these documents has to be submitted. These things have been submitted within 5 days. So you can prioritize your things also if you do that accordingly. So I think it is very important that we maintain assistant diary in administration, and also keep updating that diary on a weekly basis at least, if not daily, so that we have the pendency list with us, how many things we received, how many things we have already submitted, and what is to be submitted. So that kind of accounting is also becomes very easy if we maintain that. And that diary can be maintained physical form, or it can be in a computer, in a particular file. As we do in many of these sections, there is no diary register these days. Basically, it is done through our computers, through a program. File tracking system is also there, FTS, as we say. There may be a manual file tracking is not required. Everybody knows where the file has gone, from which office, in no time, absolutely flick of the button. So these automation, ICT, and slowly AI will take over many things in our administrative processes. But obviously, you can understand the human mind, understanding, interpretation of multiple rules, that cannot be done by a machine. Obviously, then it is the people who are doing it has to do that. But I think we should be able to also think like that and use such technology in a very smart way to help us in our exercise, not to replace us, to help us to maximize the productivity of the organization, to do things more smoother and faster, and in a more efficient manner. So I think that should be the motto of our doing such kind of things actually. So importance of AI is important. And another aspect I must touch upon is noting drafting. At the very beginning, Mr. Jha told that whenever any paper comes, we write place below is a paper, so and so, and then we reproduce the entire document, what is being written in that 1 page, 2 page, and then ask for direction. That is not noting. Noting is reading that particular document. Then the first para should mention in crux what the matter is all about, while mentioning the date and the date when it was been received, the date when it's been deliberated, and then you write the brief one-liner at least what the matter is all about. Is it a complaint? Is it a request for a particular benefit? Or is it something which is not generally being done by that particular section, maybe something very different?
one liner has to be mentioned. Then the second, third, fourth para, one should actually analyze it. What has been written in that, not strictly just reproduce it. Suppose in a particular piece of paper, somebody has put a slang about some other person and it is put on the green note sheet, the same thing. That means we are almost co-opting with that particular complainant that we are putting it in our green sheet. So we must use systematic ways, to submit a note which will be giving the summary of the things which are there in a particular FR or a PUC, maybe it's a 10-page representation. So it can be done in 2, 3, 4 paragraphs. That's it. The main issues, what is being highlighted. And then you come out and talk about the respective rule position. Many times it happens you are able to analyze it, put the rule position, but you are not interpreting it, leaving the interpretation to the competent authority. No, that is again not correct. Because the interpretation of which rule or which set of rules will apply that on that particular matter, we must, I also want attention of people sitting here with me also, that how you are going to interpret that particular rule in that context, that also has to be explicitly mentioned. And if there are more than one interpretations, let that also be mentioned if there are more than one interpretations. Then you can come out and say, okay, these are the 2 or 3 interpretations by applying these 2, 3 rules. Now seeking a direction, which one has to be done. And if the matter is very clear, so you conclude that this is the rule position, this is the fact, this is the rule position, this is the interpretation that this particular clause of a rule applies. So you are asking for a conclusive sentence that approval is seeking. So this is the way we should be writing. Even while communicating a decision of the competent authority, it is very important to refer to the communication that we have received and try to maintain the letter number as identical to the file number. Because if you have a file number and a letter number very different, that is the suppose establishment 1 / so and so file, same number you can use in a letter. The last number can be the dispatch number of the particular letter. So then you can say that letter of even number dated so and so. The word even number, when we use, actually what it is basically the number of the file. So you did not write it every time. So important is that we must understand the smaller nuances in administrative processes and practice. And also I must talk about, when you talk about file management, this is talking about the letters. And in the letter also what happens? Suppose you write a letter and you must be able to convey the decision of the competent authority in letter and spirit. Because suppose a decision has been taken on a particular matter and it is not communicated exactly the way it has been decided, then also it will create confusion in the public domain, or to the beneficiary, or to the person who is intended, for whom the letter has been intended. So these are the kind of things we need to understand in noting drafting, that we have to be very meticulous in our language. And there is no harm in writing a note in Hindi. If we are not comfortable in English, let us write it in Hindi. There is no problem. If we write it in Hindi and we think that Hindi or any language of that particular state, suppose you are from a state organization, wherever the state is, suppose it is in Bengal, you can use it Bengali, or whatever language is used in official parlance, that can be used. There is no hard and fast rule that only English has to be used for a particular communication or noting drafting. Whatever language you are comfortable with and that is acceptable in that particular area, you can use that language. So what is important is not the English language, but what is important is that how you are submitting that particular matter. In many of the occasions, it has been seen that request is something, submitted is something, communicated is something. Absolutely, they have no connection whatsoever. Then again, a representation will come. Again, the matter will be revisited. So much of manpower and man-hour is wasted in the public system because of this kind of back and forth of papers. We should do away with that actually. And rather, if a particular section actually has, I suggest it to many people, that you have got a set of things which are generally those kind of things only come to you. It is always better to have a standardized note and a standardized letter format, so that you deviate the least. Actually, in our university, we have done it. In fact, I have done on
Wherever I have worked, I have tried to systematize the particular processes through standard operating procedures. That operating procedure also includes standard noting drafting formats. Because when no application of mind is required, there is no harm in using such formats, because it attunes a particular mind. Okay, this kind of thing, I'm going to submit it in this manner. So no point will be left out. As you do in a case of a pay fixation or a withdrawal from your GPF or the CPF, there are pro formas, so that every information is captured in that. So similarly, when you submit a file, a proper noting, not all files cannot be done like that. I understand that. So in that case, you can very easily use this particular format where the similar kind of things are coming in. A lot of time and energy is saved in the process actually. So I personally feel that you should also look at this aspect in your organization when you try to implement this kind of systems. And when you do that, actually a lot of time is saved when this kind of exercise we carry out. We talk about AI, but I think we can use it, this kind of similar matters to be dealt in a similar manner. So the minimum distortion is there. Everybody knows the para 4 of that particular note will contain this kind of information. Para 5 will be having this kind of information. And another important thing is that if you are deliberating a matter for a continuous period of time, it is very good that you put para number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose a letter is issued, then again the matter is taken up. Again you put some paragraph numbers. If you do that in a continuous manner, it may be 100 paragraphs, but you never lose the sequence of the event, how it has evolved over a period of time. There are many cases which may be dealt for 6 months or 8 months or a year, which may end up in a court case. In that case, it is very easy to refer to that particular paragraph where the similar thing has been dealt in this particular matter. And if you are preparing a reply to your writ petition also, it helps to refer in that particular case. So providing paragraph number in a note is also one way of systematizing your records. And when we come out this in a particular file, as we talked in the initial stage, what is a file? So I said there's a note portion and a correspondence portion. And suppose there is a file on which some important papers are there, which is negatively affecting some senior person, and he wants to just by applying his mind, he takes out 2 pages from the note portion or the correspondence portion, and nobody can prove that. Just by the regular file numbering, it may not be possible to detect it actually. How do you do that? Now, what happens? There is a mechanism. I don't know how many of you are following. Let me just summarize it in a little manner. I think this is very important. Whenever you put serial number on your note sheet, 1, 2, 3, 4, N. So this is note sheet. In the correspondence side also, you may be using serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, no problem. 200, 300 serial number is going page wise. But there is another component. Every FR can be numbered. Every effort can be numbered separately. Suppose the first FR on which the file is opened, given number 1 or A or whatever it is. Running, suppose that FR has got 10 pages. So you write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no problem. But that particular FR is number 1. So what happens the moment you do that, you make an entry in the note sheet and you write that this FR 1, that is first FR, P 1 to 10, oblique C, that is correspondence. Means on the correspondence side of the file, there is a 10-page FR. The FR number or the PUC number is 1. I repeat, the PUC number is 1. In that there are 10 pages. So you write, FR or PUC, and it is page 1 and the page number 1 to 10, oblique C. That means on the correspondence side. The next FR you are applying after 5, 7 pages, whatever decision has been taken, letter issued, another FR comes in the same file. Again you write it is FR2, page number 11 to 50, maybe it's a 40-page document with all enclosures. Give running numbering. And then you see C. So you write there. And similarly, on that particular FR you write on which page of the note sheet that FR has been deliberated. Page 1 oblique 2 oblique N, 1-2 oblique N. So page 1 and 2 के नोट शीट में वो FR डिलिबरेट हो रखा है. ऐसा अगर आप करेंगे तो कोई भी चाहते हुए भी कागज फाइल से गायब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी कागज ऐसे गायब होगा तो उसका दूसरा एंट्री दूसरे तरफ है, और दोनों चीज गायब होगा तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा कि फाइल जो है ये तो टेंटेड फाइल है. तो आराम से कोई पेपर फाइल से नहीं निकाल सकता कोई.
इस तरह का umbilical relationship हमें develop करना है between the FR and the note sheet. And for every entry, and suppose some letter has been issued. So how you say? You simply write after that note sheet, draft letter is submitted for kind approval, your undersecretary, deputy secretary, AR, assistant registrar, deputy registrar, joint registrar, whosoever signs or registrar signs it, letter is issued. After the issued signature, everything you write on that note sheet only. I, page number so and so oblique C, page number 51 oblique C. That means, and the page number 51, that second FR's reply has gone. It is reflected on the note sheet. So these kind of intermingling of files are very, very important for an integral file management. It gives continuity, it gives perpetuity, it makes our decision making uniform, systematic, rule bound, and there is minimum opportunity of discretion for a wrong cause. If any influential person also wants to obtain a decision in his or her favor, that person will think 10 times, because on that same file, there will be 100 decisions in a very different manner. You can tell your seniors that this cannot be done in this manner, because already 100 decisions have been taken like that. ये सारे correspondence और ऐसा हो रखा है सर, कहां से क्या करेंगे? ये तो पकड़े जाएंगे सर, आपका भी साइन हो रहा है. तो अपने आप बोलेंगे ठीक है, जैसे रूल से है वैसे करो. I'm giving a very hypothetical example, absolutely hypothetical, nothing to do with any person living or dead. So this is the way we can have systematic administrative processes and procedures. I don't know how far you have understood the last part of it when I talked about this FR business and is crisscrossing. Are you doing it in your organization in this manner? By the way, I just wanted to know about it. Everybody is silent. Sir, we will be putting the file numbers and the note numbers, but not the thing what you told us, sir. From now onwards, we will need to put it. But tell me, how do you find this particular process? It is After very I good, sir. explain? It is very good, sir, so that we can easily trace the papers and also know Yes. where the situation has happened. Absolutely, and there is a least possibility of the papers getting misplaced. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And also going back little an hour back when I was talking about merging of part files, now you see when you merge the part files, what will happen? You will say, अरे वहां तो I have written वो सारा तो उस part file के number के हिसाब से लिखा था, बिल्कुल लिखा था. Now when you merge it, you cut those numbers in pen through so that it can be read. It can be read what has been cut. A new number of the main file is given one after the other in the sequence of the decisions when Yes, it is sir. merged. So when Yes, you sir. do that, what happens in a particular file? The file becomes an integral memory of the organization, not the section only. Yes, And sir. what happens if some officer is on leave? Doesn't matter what has he done, it is already written on the file. Suppose a very important officer dealing with the file is on leave, how does it matter? Individuals don't run the system, it is a system which runs. Individuals will come and go. So the relative importance of individuals will come down, but the system will become more powerful, more energetic, and more systematic in its approach. And also while giving reply to RTIs, it helps you which information that person is seeking. In a Gatta culture, you know, if you put a Gatta and then you put a paper and then you get it approved from the competent authorities, someday the papers are not available. Who knows which file has gone where? So if you today even give the photocopy, tomorrow it might happen the file is not available. कहाँ से दिया था copy? Sir वो file तो मिल नहीं रहा आज. 6 महीने बाद CIC में केस लगा, सर वो फाइल ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया. तब तो था, हमने दे दिया था. It happens. It can happen with any organization. So I think file management is important. And I'll also tell you to take up your issues for the disclosure of the financial estimates on your website. This is a very important transparency measure. Every organization should have it actually. You can give a reference to the training also that you have attended and this matter was discussed. You can come to our website, Delhi University website, du.sc.in, and you can find our financial estimates right on the website from 2008-9 onwards, if I'm not wrong. Yeah, 2008-9 on, because I took over in 2009 as a CPIO, right? So I think after that only I did that, yeah. So there is no harm in doing that.
And many things we do not do, we don't even know that we are not doing it actually. It's just an initiative. I talked about that attitude. I started the discussion with that Choluteka example. I talked about attitude, I talked about initiative. Why I talked about them? This is because of this reason. Put that little extra energy into the system, put that little extra effort in the system to put the system in perspective, take some personal interest not for personal gains, personal interest to put the system ahead. And if everybody puts 0.1, 100 people, it becomes 1, in fact 10. So you can imagine that even small drops will make an ocean. So similarly, in a government system, when we talk about efficiency, we talk about minimum governance, governance, the maximum government. Minimum use of manpower and the maximum utilization of the services of the government. It can be done accordingly with that only. So that is only possible when we use these kind of smart techniques. AI and ICT will definitely help us out. It is already helping us out. It's going to help us out in more ways than one, I can understand. But this is something which is very important according to my understanding. I don't know, I've just tried to give a kind of a bird's eye view of administrative processes and practices which we should follow. I'm sure many of you will be following it, but how far all of us are doing that, I do not know. But I am opening the floor for discussions, any questions, anything on any matter in administration. ठीक है जा सब? बिल्कुल। Because I think you will finish it up. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। प्रॉब्लम क्या आ रही थी काम में? हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है सर से? मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सर का जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर है वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं कि भाई हमारा आज जो है ऑफिस प्रोसीजर और मैनेजमेंट पे है, जैसे सर ने आपको बताया, किसी भी एस्पेक्ट पे अगर आप चाहें, इंक्लूडिंग दिस, ये तो है ही जो सेशन चल रहा है, किसी भी एस्पेक्ट पे आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Sir, it was really enlightening experience for us to have such detailed discussion on office procedures. We, day to day, we experience all these things, but the systematic way and, the effectiveness of office management system, which is seldom we forgot. And, very casually we move the files, very casually we record the documents. It's really a problem for any organization. So as you informed earlier that you have developed some manuals kind of things for office procedures or, coding and all that. So if it is possible, so can you please share those documents with the participants? I will tell the establishment to retrieve the soft copy. It's quite 12, 14 years old. I'll tell them to have the soft copy and then give it to you. There is no problem. It's as good a public document one can think of. It is basically a document. You can use it as reference, and many of it you can straight away use, only changing the name of the sections of your organization. Yeah. Yes, because the kind of, just giving a very small example is that suppose you are having a subject matter, say file relating to reply to parliament questions. You can have a head. We have suppose you give a head of say 35035 ahead. So any parliament question file you are opening, you have a 35035 code. So if you tell your office assistant just अगर 35 नंबर कोड का फाइल निकालना कहाँ पे पड़ा है, उसको कुछ नहीं देखना, रेड कलर का फाइल था, ग्रीन कलर का फाइल था, वो सीधा 35 नंबर कोड के फाइल ढूंढेगा. Exactly. It becomes this easier actually, so this kind of documentation helps in such a manner that it gives perpetuity to your documents also. Suppose you have given a reply to a parliament question and a similar question has come after 2 years, at least you can refer back to that parliament question what we have replied. Sure, sir. Because what happens then, otherwise what happens, suppose you are giving some information today and after 2 years giving different information and someone points out, then you are at a miss कि अरे पे तो गलत दे दिया हमने, ये तो पहले वाला सही था या पहले वाला गलत था आपका सही है, मतलब
You understand what I mean? At least you can बिल्कुल reconcile सर, and ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत बार हम लोग फेस करते हैं सर, इवन वाइल रिप्लाइंग टू द आरटीआई एप्लीकेशंस। yes, तो होता क्या है कि पहले कुछ और जवाब दिया रहता है, फिर उसके बाद उसका कॉन्ट्रडिक्शंस रहती हैं, डेटा में ये कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, इंफॉर्मेशन में कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। मैं तो ये आपको एक जी छोटी बात बताता हूं कि सपोज आई हैव dealt with maybe around 30,000 matters under RTI Act on सर, so many years. So even I at times forget that what decision I've given on a particular matter. So I will call a dealing assistant, and there are some dealing assistants who are extremely competent. So what they will do, they will say, sir, yes, I think some 474/2017 there was a decision of yours which is very similar to this decision. So I said, okay, can you bring the file? Okay, the file is there before you in 10 minutes time. Then you see, okay, achha, this kind of matter I've decided in this way. I think now this is the more reasonable one. Okay, fine, go by that. It reduces your stress also. It reduces your time also, because a similar matter you have already decided. A 2.5-page decision you are giving, if you have a previous reference of your same decision, you can at least look at it. Okay, fine, I've given it in this manner, maybe 5 years back. You understand? So these kind of things, that's why I say the institutional memory. What happens, the institutional memory is very important, and institutional memory gives consistency of decision making. And that is, I find it very important, believe you me. Why I take up this topic, because these days I have been going at various places and people ask this question. ये दिक्कत होता है, ऐसे परेशानी होती है, पुराने फाइल नहीं मिलता, कोई डेपुटेशन में गया कहता है फाइल ही नहीं मिल रहा, पता नहीं लोग पुराने लोग फाइल ही नहीं दे रहे, कैसे डिसीजन ले, कोई गत्ता लेके आ जाते हैं, so many problems on the ground, to be very honest with you. So that's why I सर, thought एक एस्पेक्ट मुझे लगता है जो हैंड ओवर टेक ओवर का प्रोसेस है सर, जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, बट वो बहुत कैजुअली एक्चुअली क्या है सर, मैं जैसे हम कोई सेक्शन को मैं लीड कर रहा हूँ, कभी बतौर डेप्यूटी रजिस्ट्रार लीड कर रहा हूँ, या उसके बाद मैं बतौर फाइनेंस ऑफिसर लीड कर रहा हूँ, तो जिस समय हैंड ओवर टेक ओवर होता है, इन ऑफन वी सी दिस कि ऑफिसर चला गया, ठीक है, उसने कहा भाई सेक्शन से पूछ लेना कि सेक्शन पे मतलब सब कुछ सेक्शन के पास है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है ये, बिल्कुल हाँ, सही कह और रहे हैं। वो गुड फेथ में आदमी हैंड ओवर टेक ओवर पे सिग्नेचर वगैरह सब ले लेता है। बिल्कुल। इवन कई बार तो मैंने ये देखा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इटसेल्फ, मतलब आप मॉड्यूल्स बहुत कैजुअली वे में सेक्शंस दे देते हैं, और एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज सामने आती है कि साहब वो डॉक्यूमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, और वो तो उनके पास था। तो ये कोई रोबस्ट सिस्टम इसके लिए, या कोई एक प्लान कोई इस तरीके का हो, तो ज्यादातर मैंने देखा नहीं, मतलब आपके यहाँ है, बहुत बढ़िया है सर, आपने लीड किया, इनिशिएट किया, तो इट्स वेरी गुड, but not only me, Delhi University's administration is very robust. Yeah, and I know, sir. and the officers who are dealing with are highly competent officers, believe you me, in every sphere. Even you will seldom find such set of so many competent officers in a system at one point of time, led by our registrar, so is heading the administration. Honorable Vice Chancellor's directions and guidance is always there, but the officers who are working on the ground, the assistant registrars, the deputy registrars, the joint registrars, even our dealing assistants, the section officers, a profound knowledge and understanding of things actually. And they have a propensity. Even today I'm just sitting before you people, and this entire room, if the camera can see, so many people are sitting to listen to me actually, to be very honest. And they are not directly my staff, there are some probably from finance, somebody from administration, because there is a common understanding that if I'm talking on a particular day, so what happens, let whosoever wants to come and have some time to come and listen to me. So that kind of thing. Me means any officer, to be very honest with you. So Yeah, we are that's great, actually sir. maximizing the time and also the energy of the same thing. I can tell these people sitting in another room for another 2 hours. Why should we be doing that? Yeah. So they are participating it as in-house, so I think it gives a fair understanding of things, so how we are actually addressing these issues, and how our administration is robust, obviously under the able guidance of our registrar, Dr. Vikas Gupta. So this is the way it is actually, I think. But one thing I just today I found that the financial estimate thing, as I just came to know that some institutions do you put out a financial estimate on your website? No, sir. Yes, sir. We do. I think this thing you should take up actually, because when we talk about transparency, I'm a very pro-transparency person, to believe you me. Every functioning and every action and conduct.
I think it's important that it is there, because I'm telling you for the third time today, because this is something which gives a transparency a new dimension actually. Yeah, And do read section 4 of the RTI Act. Yeah. Unfortunately, didn't have a full session on RTI this time around. Section 4 you read, and if you are able to implement section 4 of the RTI Act in letter and spirit through that information handbook with 17 manuals, that is section 41B, 1 to 17. If you are doing it correctly, believe me, most of your issues are already in the public domain, and you will receive very less number of RTIs, applications under the RTI Act. In fact, go to section 4.2. It says so that if you put all your important information in the public domain, there will be send out any requirement of anybody to put an application under the RTI Act actually. It may not be required. So that's what it is all about, you know. But it was really nice talking to all of you, and you have been extremely, you know, Mr. Dr. Sanjay, that you are very interactive. In fact, all of you must have listened to me. I don't know how much you have benefited, but it was really a pleasure talking to all of you for last whatever time. Sir, I have one question, sir. Yeah, please, ma'am. Please. Sir, regarding the weeding out the records. Yeah. So for the examination branch, what are the minimum records we have to maintain, sir? Okay, very, very important question. You see, you go to that order of the Honorable Supreme Court of India of 9th August 2011. It is 9th August 2011. Okay. Aditya Bandyopadhyay versus Union of India. Okay. In that particular order, the Honorable Apex Court actually had directed disclosure of evaluated answer script. In fact, allowed inspection. You will be surprised the very next day, that the 10th of August, there were students outside my office with a newspaper cutting that now the answer script are in the public domain, now provide a copy of the answer script. That was the kind of enthusiasm at that point of time. Just giving a very small anecdote. But see what happens in that particular judgment, you read it really carefully. There are some 54 paragraphs. Do read paragraph 53. Do read paragraph 53. It is actually not the operative part of that order, but it is actually an obiter actually, where the observations of the Apex Court are there. And also there is a paragraph number I'm forgetting right now, because of whatever. You just go, and where it has been written that an organization has the prerogative to decide the record retention schedule of the evaluated answer script. The evaluated answer script is not even any document, but that record retention schedule should be in the public domain. Means it should be on your website. Suppose you want to actually understand that, suppose somebody wants an answer script copy from your organization, examination branch, that person will put a request. Suppose you don't disclose the record retention schedule, suppose it is 2 months, 3 months, 4 months, or whatever, according to your operational requirement and administrative convenience of your organization, how that person knows how many days you are keeping that record? So do put that record retention schedule in the public domain, and you can have it as for 1 month after the examination is over. It may be 6 months, whatever it is, but it has to be put in the public domain. There is no bar in taking any decision. But definitely it should be a reasonable time. It cannot be that today examination over, after 10 days result is declared, and after 2 days you destroy everything. A reasonable time has to be given to another person to put an application. So it has to be reasonable. Reasonable, you can say 3 days, you can say 30 days, that can be debated. But I think at least 2 months or 3 months time frame should be there for at least the students to approach you for a copy of the answer script. So that is a kind of thing that would be very unofficially, I can tell you, but very, it doesn't have any legal basis, but you do read that judgment. It has a para devoted on the record retention schedule only. Sir, another thing about the results, sir. About the results, whenever we declare the results and the award sheets and all that, is it mandatory that we should keep all the records? Result after you declare, yeah. What kind of record you are talking about, by the way? Results will be preserving about the answer, the consolidated marks and the degree certificates and the provisional grade cards. Degree certificates, so you are giving to that particular student. So you don't have a copy of the degree certificate, I think. You have a record that degree has been issued.
No, You sir. can have We'll a keep a copy of it, sir. Yeah, I understand. No, I think that also, you see what happens in your organization, if you have space crunch or anything like that, you can weed out the records. But remember one thing, these days, weeding out of the records in examination, it is better that you have a scanning mechanism. So Yes, sir. scanning, you scan those documents, keep it in a hard drive so that you can retrieve it. Hard copy records you may do away with. There is no problem. After the work has been done, maybe after a month you can do that. Right? Sorry to Yeah. intervene, Yeah, sure. sir. And sorry, ma'am. Now we have the time constraint. Our next resource person has already arrived. So time limit is there. So now we are going for the next session. And this is all for this session. If any query is there, so you can put in the group. We will get it clarified from the sir and we'll revert to you. It was Okay, sir. really Thank nice talking to all of you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Sir, thanks. Good, sir. Visible time. Thank you, sir. Thank you, sir. Very informative session, sir. Sorry, मेरे आपको अरे no, absolutely. आरपी तुलसियान जी हैं. अगर इफ वी विल गो बाय द प्रोफाइल ऑफ सर, तो जो सर का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. सर इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर द प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सर इज ऑल्सो ए फेलो मेंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया और एसोसिएशन ऑफ लाइफ मेंबर ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. सर का इसके अलावा जो है टीवी सीरियल वगैरह में भी और उधर जो है दूरदर्शन पे भी सर के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जिसमें एक सर का फेमस वो था पैसा हमारा और फैसला हमारा. आप सब जानते हैं कि जो फाइनेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर एक से रेलिवेंट है और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे रिलेटेड है या मुझसे रिलेटेड नहीं है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत है इन ऑर्डर टू मूव इन द लाइफ. वो चाहे आप ऑफिस के पार्ट पर हो, घर के पार्ट पर हो, रिलेशन में कहीं भी देखेंगे तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो हर एक स्पेक्ट्रम को टच करता है हर एक की लाइफ में. तो सर आज हमारे बीच में हैं, थोड़ा सर का टाइम कंस्ट्रेंट है और वी आर वेरी थैंकफुल टू सर कि आप हमारे बीच अपना टाइम निकाल के आए. ज्यादा समय ना लेते हुए ना मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन कैंडिडेट कौन इंट्रोड्यूस करें जो ऑनलाइन भी हैं. ऑनलाइन Sir, I am Shiv Prakash, Manager International Guest House, University of Delhi. ओके, वेलकम शिव प्रकाश. जल्दी जल्दी अपना थोड़ा ब्रीफ देके सब लोग शुरू करें. My name is Atul Kumar Jain from Shamlal College, Administrative Officer. ओके अतुल, वेलकम. Than you, sir. Thank you. HNB Gurwahati, Srinagar, Garhwal. हाजी. My name is Arvind Kumar, HNB Garhwal University, Srinagar, Garhwal. अजी ये अच्छा आप सर दिल्ली से भी है. अच्छा अच्छा, मणिपुर से हैं, ओके ओके ओके, तमिलनाडु से हैं. जरा ठीक कर दो बेटा, किनका हो गया है. आप बोलते रहे. नेक्स्ट Sanjay Kumar Dhyani from HNB Gadwal University. Right now, I am holding the additional charge of finance officer. Basically, I am the deputy registrar here in Uttarakhand. ओके ओके. Sir, I am Rajendra Singh, English and Foreign Languages, Lucknow. लखनऊ से. Yes, sir. लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रॉपर या वो बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी? No, EFL University, English and Foreign Languages. EFL University, sir. Okay. Regional campus. Next. Sir, I am Paramila Joseph, Assistant Registrar, EFL University, Hyderabad, sir. Hyderabad. Welcome, madam. Sir, my Thank name you, is Padma. I am assistant registrar. My name is Padma, sir. I am assistant registrar, controller of examinations and academic section, sir. English and Foreign Languages, University, Hyderabad. Okay. Welcome, welcome. Thank you, sir. Sir, I am Dr.
I am Dr. Shailesh Chaturvedi, Assistant Registrar from Gujarat University. गुजरात यूनिवर्सिटी, वेलकम जी। जी सर। गुजरात वालों को तो ज्यादा वेलकम कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी हो गया। हाँ जी, इधर से भी। नमस्कार सर, एसपी बादल फ्रॉम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर सर। एक गाइए, आपके दो और भी कुलीग आए हैं, पता है आपको, जानते हैं उनको? हाँ सर, जानते हैं सर। Then it's okay, then it's okay. सर, आई एम देवेंद्र कुमार आजाद, सेक्शन ऑफिसर, काउंसिल ब्रांच। काउंसिल ब्रांच में, ठीक है, वो तो उधर साइड में होती है। हाँ जी। सफाई होती है वहां पर, पहले तो नहीं होती थी। तो सफाई है सर, अब है। अच्छी है सर, ये विजिट है? आप देख सकते नहीं, हैं। मैंने तो विजिट किया था, तभी तो सफाई करवाई थी मैंने। अभी है। मैं तो सफाई करवाई थी, अगर आप उस समय थे नहीं, मुझे 10 साल पहले, 12 साल पहले, जब दिनेश सिंह थे, प्रोफेसर दिनेश सिंह थे, तो इलेक्शन से पहले मैं आया था देखने। उस टाइम तो बहुत ज्यादा हुआ था। है? उस टाइम तो हालत ज्यादा था। अरे मैंने सारी सफाई कराई थी खड़े होके वहाँ। काउंसिल ब्रांच में मेरा ये वो हाँ, सेक्शन ऑफिसर डेस्क एंड फाइनेंस को। डेस्क एंड फाइनेंस। अच्छा। हरिचरण मीना, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस 13 एंड जीआईएस। जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस चलती है अभी, आजकल बंद हो गई? जी, चल रही है। चलिए, पेमेंट मिल रहा लोगों को टाइम से? हाँ जी। मेरा नाम पावन समीर लकड़ा, हाँ, सहायक कुल सचिव भर्ती, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट। हाँ, नाम है पावन समीर लकड़ा। ओके, वेलकम। और कोई है? माइंड से अखिलेश कुमार झा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है सर। अरे यार, क्या बात है। मैं मीनाक्षी। मीनाक्षी, अपना इंट्रोडक्शन दो। हाँ, क्या बात है। नहीं, मेरे को इधर आइए। कुमार, सीनियर असिस्टेंट डेस्क। और भी कोई है? सब हो गए? Sir, good afternoon, sir. This is Pawan Kumar from Central University of Haryana. बोलने दीजिए, ऑनलाइन वालों को पहले बोलने दीजिए। ऑनलाइन है लेडीज, पहले बोलेंगी। हाँ जी। Good afternoon, sir. My name is Sanjana. I am Assistant Registrar in Indira Gandhi Delhi Technical University, Kashmiri Gate. कश्मीरी गेट, न्यू दिल्ली। Yes, sir. नियर पोस्ट ऑफिस। Yes, sir. वहां पे एक और भी है ना बेटा, संजना? कौन sir? वहाँ एक यूनिवर्सिटी और भी है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर। वो बता प्रसूति गृह है यूनिवर्सिटीज का। हाँ सर, वो पहले से ही चलती आ रही है। पैदा होती रहती है, पैदा होते चल पड़ती है, 6 महीने बाद निकल जाती है, साल भर बाद, कोई 10 साल बाद निकल जाती है वहां से। हाँ जी सर, हमारा भी अब नरेला में बन रहा है कैंपस नया। मैं पार्टिसिपेंट्स जो ऑनलाइन है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कल अगर आ सके, वैलेडिक्टरी सेशन है हमारा, फिजिकली इफ दे कैन कम फॉर द प्रेजेंटेशन एज वेल एज वैलेडिक्टरी सेशन, इट विल बी ग्रेट। थैंक यू। कितने बजे है सर? लास्ट सेशन जो होता है हमारा, तो टाइम तो बताओ उनको। 5 बजे। इन लोगों को पता है? 4:40 4:15 से शुरू होता है, 5 बजे। इतना सीक्रेट क्यों रखते हो? नहीं, सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते दिया हुआ है पूरा शेड्यूल हमारा है ग्रुप में। सर, मैं सीपीआई को रजिस्टर हूं। ओके, अच्छा जी, शुरू करें भाई। Good afternoon, sir. Myself Pawan Kumar, Assistant Registrar, Vice Chancellor Secretariat, Central University of Haryana. सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। मैं पहुंच गया था हरियाणा में एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। Sir, कब आए सर? वो कुछ वो ग्रामीण का कुछ प्रोग्राम था कृषि वालों का। अच्छा, जी जी, बिल्कुल था सर। 3 साल पहले वो सर, आपकी ये वीसी मैडम ने ऑर्गेनाइज किया था वो। अच्छा सर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार हैं वाइस चांसलर अभी। हाँ बिल्कुल, उनकी वाइफ ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, वो हाँ हैं प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव। हाँ, अच्छा चलिए, अब शुरुआत करें सर। अच्छा, आज के एक तो मैं आपको फ्री कर देता हूँ। आज मैं कोई भी ऑफिस के कानून वाली कोई बात नहीं करूंगा आपसे। प्रोसीजर के बारे में, रूल्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, फॉर्म के बारे में कोई बात नहीं करूँ। यू नीड नॉट वरी, उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा इसकी, पैसे की, फाइनेंस की, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाई फाइनेंस शुड बी लर्नड। फाइनेंस क्यों पढ़े? मैं तो फाइनेंस में काम नहीं है, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मैं तो उसमें हूँ, रिक्रूटमेंट में हूँ, मैं एचआर में हूँ, मेरा तो कोई मतलब नहीं फाइनेंस से। फाइनेंस वाले अलग हैं। क्या ऐसा सोचते हैं आप लोग? ये मेरा काम नहीं है?
हाँ जी, ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंस मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा काम नहीं है फाइनेंस का। नहीं सर, फाइनेंस सबको पढ़ना चाहिए, सबको, क्योंकि सबको फाइनेंस का काम करना पड़ता है एवरी ऑफिसर को। अगर एज ए ऑफिसर नहीं करना पड़े तो एज ए हस्बैंड करना पड़ता है फाइनेंस का काम। यस और नो? एज ए वाइफ भी करना पड़ता है, एज ए वाइफ भी करना पड़ता है। यस सर। वो ज्यादा करना पड़ता है, वाइफ को ज्यादा करना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है। हस्बैंड कितना कमा के लाया, टाइम से दिया नहीं पैसा, लाया नहीं लाया, वाइफ खुद भी कमाती है। वो तो अपने तो थोड़ी बताएगी किसी को, दूसरे की कमाई का ढूंढ के रखती है, रिकॉर्ड रखती है, मेंटेन करती है, खर्चे चलाती है। ये मैनेजमेंट है। और याद रखिए, जिनकी वाइफ मैनेज नहीं करती उनका तो मिसमैनेजमेंट रहता है। करेक्ट सर। ये मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ अनुभव से अपने। मेरी तो वाइफ मैनेज करती है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनकी वाइफ नहीं करती है वो बहुत परेशान रहते हैं। जो फाइनेंस ऑफिसर है वो भी परेशान रहते हैं, उनसे लोग परेशान रहते हैं फाइनेंस ऑफिसर से। किसी का पेंशन रुका हुआ है, किसी का इंक्रीमेंट रुका हुआ है, किसी का एरियर्स है, मुकदमे होते हैं कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? खाली हाई कोर्ट में नहीं होते, आरटीआई लगती है, और फिर मामला डबल बेंच में जाता है, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आर यू अवेयर ऑफ इट? आप नॉन टीचिंग से हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, क्या आपको ऐसा पता है कि गवर्नमेंट का मतलब यूनिवर्सिटी का बहुत सारा पैसा इसमें बर्बाद होता है? आर यू अवेयर ऑफ इट? इन लिटिगेशन में बर्बाद होता है पैसा, फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस, यस सर। फाइनेंस के लिए फाइनेंस का झगड़ा। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, उसमें पेंशन डिपार्टमेंट, सैलरी वाला आदमी बनाने वाला, पेंशन सैंक्शन करने वाला, एनुअल इंक्रीमेंट देने वाला, ये सब फाइनेंस की प्रॉब्लम है या नहीं? मानते हैं आप? अब आ जाइए जरा पर्सनल के ऊपर आ जाओ। अब जो फाइनेंस आपके पास आया है उसे कहाँ रखना है, इस्तेमाल कहाँ करना है, सेव कहाँ करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये समस्या घर के अंदर भी है, पर्सनल लेवल पर है। और जिन्होंने इस फाइनेंस को मैनेज नहीं किया है, ध्यान से नहीं रखा है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप बताएं कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में कोई ऐसी, वैसे तो कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, जो पीएफ होता है आजकल तो कम हो गया है, वरना पीएफ का इन्वेस्टमेंट करना एक समस्या थी। कौन से बैंक में थे, किस बैंक से ज्यादा ब्याज मिलता है, टेंडर मंगवाए, कैसे करें? आपने इस बैंक को क्यों दे दिया? प्रिंसिपल ने या एसओ ने या रजिस्ट्रार ने, जॉइंट रजिस्ट्रार ने कोई कमीशन तो नहीं ले लिया? ऊंचे वाले को क्यों नहीं दिया, नीचे वाले को क्यों दे दिया? यानी अब भैया नीचे वाले को इसलिए दिया है कि ऊंचे में देते तो वो इंडिया कोऑपरेटिव हो जाता। हाँ 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 हाँ, ये नहीं देखेगा बैंक कैसा है, कोऑपरेटिव बैंक को दे दोगे तो फिर ये तो फिर यही बैंक को देंगे सर। ये बिल्कुल ठीक है एकदम। नहीं, उसमें भी नेशनल बैंक में देखेंगे किसका रेट ऊंचा है, नहीं देखेंगे? है जी, सेंट्रलाइज नेशनलाइज बैंक में भी हम ये देखते हैं हाईएस्ट रेट किस बैंक का है। कई बार इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, तो वहां फाइनेंस ऑफिसर की, ज्वाइंट रजिस्ट्रार की कलाकारी देखी जाती है, क्या कहां पर करवा रहा है जमा। उस बैंक को पैसे दो जहां हाईएस्ट रेट मिलता हो। ये सारी फाइनेंस की समस्याएं हैं। पर्सनल में भी ये समस्या है। पैसे आते इन्वेस्ट करो, टाइम से इन्वेस्ट करो, अच्छी सिक्योर करो, किट्टी में मत डालो, किट्टी में नो, किट्टी नो कमेटी। जानते हैं ना किट्टी, मैडम संजना जानते हैं ना किट्टी का? हाँ, किट्टी और ये जो जेंट्स होते हैं इनकी कमेटियां होती हैं। इन दोनों में होता ना खाता ना भाई, जो ऑर्गेनाइजर कैसे सही। किट्टी में तो कई लेडीज लुट गई, पैसे लेके भाग गई। दूसरी लेडीज क्या करती है, किट्टी क्यों कौन बनाती है, किराए पे कोठी खरीदती है, उधार लेती है, फ्रिज लगाती है, बढ़िया शो बनाती है,
और पैसे शुरू कर देती है इनाम निकाल के, 4 इनाम निकाले के छठे महीने गायब। और 6 महीने के अंदर सब लेडीज अपनी भाभी को, बहन को, बुआ को, चाची को, ताई को मेंबर बना देती है उसके अंदर, और उसको गिफ्ट देती रहे। किसी को फ्रिज दे दिया, किसी को टेलीविजन दे दिया, 2 in 1 दे दिया, वो औरों को मेंबर बनाती है और 6 महीने में भाग जाती है। ये किट्टी में होता है, कमेटियों के अंदर भी होता है। तो मेरा ये निवेदन है आज के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, प्लीज फॉर गॉड सेक अपने पैसे किसी किट्टी या कमेटी को न दें, बैंक में रखें, सुरक्षित रखें। अब बैंक में कहाँ रखें? बैंक में एक तो आप पहले सेविंग में रखें पैसे, आप सेविंग में ब्याज कम मिलता है, 4-7% मिलता है। फिर आप कहेंगे सर एफडी करा दे, भाई एफडी में पैसे कम मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। तो क्या करें? तो कुछ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करें। देखिए किसने कर रखा है सिक्योरिटी एफडी के अलावा? हाँ जी, सेविंग, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी के अलावा कोई और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट किया किसी ने? म्यूचुअल फंड सर। नो, म्यूचुअल फंड इज नॉट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ, यस, गुड। किसने बोला? आपने नाम बताया अपना? हाँ, हरिचरण मीना ने बताया। देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देखिए किसका नहीं है, हमारे किस मेंबर का प्रोविडेंट फंड नहीं है उस मीटिंग में आए हुए? पीपीएफ जिसका नहीं है, रेज योर हैंड। आपका नहीं है, गुड, बताएंगे। हाँ जी, और कोई जो हमारे ऑनलाइन बात कर रहे हैं उनमें किसी का पीपीएफ है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, जानते नहीं है? जानते तो है सर। अच्छा, फिर भी नहीं किया? नहीं सर। क्यों? म्यूचुअल फंड और एसआईपी बेटर है सर। है जी? म्यूचुअल फंड और एसआईपी इज बेटर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन नहीं है दोनों का आपस में। म्यूचुअल और एसआईपी तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन हमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ता है, सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। अब देखिए अभी पिछले 6 महीने के अंदर मार्केट के अंदर क्या हुआ है, भूचाल आया है। यस सर, डाउन है सर। आप अपने दोस्त से पता कर लीजिए, हो सकता है यू में भी लगी, आपके शेयर बढ़ रहे हो। नहीं घट रहे सर। तो फिर आपको नहीं लगा कुछ पैसा मैं काश में अपनी वाइफ को दे देता, कुछ जेवर बनवा देता, कुछ और कर देता, ऐसा नहीं लगा? अरुण 5 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ हाँ जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि काश मैंने वाइफ की बात मान ली होती, उसको जेवर बनवा दिया होता, जो मैं हमेशा मना करता रहता हूँ? कहा दिसंबर में मैंने जेवर बनवा दिया होता? सोचा आपने कभी ऐसा? ऐसा फीलिंग आई क्या है? बस ये कह रहा हूँ, बनवा नहीं बना छोड़ दो आप। आया है सर, आया। यू आर करेक्ट आप सर। ईमानदार है, आप ईमानदार है। लेकिन रिस्क लेना पड़ता मार्केट में। रिस्क लेके मजा आ रहा है? नहीं सर। आप बात ईमानदारी से बोलो, लेडीज की बात मानो। हिंदुस्तान के अंदर सबसे इंटेलिजेंट फाइनेंस मैनेजर अगर कोई है वो लेडीज है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी नानी दादी, उन्होंने अपना जेवर बनवा दिया, बुंदे बनवा दिए, अंगूठी बनवा दी, कड़े बनवा दिए, पेंडेंट सेट बनवा दिया 80 रुपए तोला में। आज 86,000 तोला रेट है। और 6 महीने पहले जिसने खरीदा था ना जेवर, जिस मीटिंग को मैंने 8 महीने पहले एक कॉलेज में बताया था, भाई वो ले लो, सोना ही सोना। उस लेडीज का भी अभी 4-5 दिन पहले फोन आया, बोले सर मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्या हुआ? नहीं, पहले तो मैं बड़ी खुश हूं, मैं आपने बताया था ना मैंने गोल्ड बॉन्ड ले लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत डांट लगाई। मैं क्या हुआ बेटा, क्यों लगाई? बोले मेरे हस्बैंड बोले अरे तुम मुझे पहले बताती मैं और ले लेता, जा अभी जल्दी जा। तो बोले मैं दोबारा गई बैंक, जब तक 5 बज चुके थे। उस दिन लास्ट डे था, तो ये फरवरी की बात है, पिछले फरवरी की बता रहा हूं आपको। और वो गोल्ड बॉन्ड उसको उतने मिल पाए जितने उसने सुबह लिए थे, शाम को नहीं मिले उसको। उस समय उसके दाम थे 60,000, आज 86,000 है, इसलिए झगड़ा हो रहा है आपस में मियां बीवी का। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं, डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट, डोंट पुल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, गिर गए तो टूट जाएंगे। डाइवर्सिफाई योर फाइनेंस। तो एक तो यही है, आप महिलाओं की बात माने, थोड़ा गहना बनवाने के लिए उनको दें।
लेकिन जो गहना नहीं बनवाना चाहते हो, फिर कोई तरीका यस है, आप लीजिए गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड, थोड़ा पैसा उसमें रखिए आप, वो सेफ है। जब भी पैसे निकालेंगे करंट भाव का गोल्ड का पैसा मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लिया, अभी भाव 86,000 है, जब आप बेचने जाएंगे और उसका भाव समझ 1 लाख रुपए हुआ तो आपको 1.25 लाख मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। करंट गोल्ड के हिसाब से पैसे मिलेंगे, कोई खतरा नहीं है बिल्कुल भी। ये मिलता है स्टॉक एक्सचेंज से। सर उसमें मेकिंग चार्ज माइनस होता है सर? नहीं, ETF में तो कोई मेकिंग चार्ज, डिजिटल है, वो तो डिजिटल गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। उसके जब बारे आप में मालूम, उसे, आज बोलिए बोलिए क्वेश्चन। उसके बारे में मालूम नहीं है सर। आप सुनना चाहेंगे या ये बताना चाहेंगे मालूम नहीं है? तो पसंद करेंगे सुनना? जी बताऊं? यस सर, यस सर। हाँ, जैसे आप म्यूचुअल में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही गोल्ड ETF में इन्वेस्ट होता है, सिल्वर ETF, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। यूनिट मिलते हैं, यूनिट के अंदर होते हैं ये। Sir, is there a limit for that, sir? नहीं, कोई लिमिट नहीं, स्काई इज द लिमिट। अच्छा, जितना मर्जी पैसा लगाओ, जब मर्जी लगाओ और जब मर्जी निकालो, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। है जी? हाँ, डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट फ्री खुलता है, डोंट वरी, क्या है, क्या चिंता करते हो, ऑनलाइन खुलता है डीमेट अकाउंट। सबको आईडिया है डीमेट अकाउंट का? अब नो मैं नो सर। हाँ, बता देते हैं आपको सर। जी जी। आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से बात कीजिए, जैसे बैंक भी है आजकल ब्रोकर, ICICI बैंक है, SBI है, HDFC बैंक है, इसके अलावा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी ब्रोकर है, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए वो। आजकल ब्रोकर ऐसे हो गए हैं जी, सुन लीजिए, आपको बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री करने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए होता है और एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए होता है। आगे 3 in 1 हो जाते हैं। अगर आप स्टेट बैंक की बात करोगे, तीनों वहीं खुल जाएंगे आपको, स्टेट बैंक, HDFC, ICICI बैंक। इसके अलावा अगर जो बैंकर नहीं है और ब्रोकर है, वो आपका डीमेट अकाउंट अपने यहाँ खोल देगा। बैंक आपका होता ही है, वो इतना छोटा सा काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल में सर्च कीजिए, नंबर ऑफ ब्रोकर्स विल बी देयर, आपके घर आ जाएंगे खोलने के लिए अकाउंट। जीरोधा है उसका, तो आप उसमें मोबाइल पे खोल सकते हैं ऑनलाइन। अपस्टॉक सर, प्रो है जी, हाँ जी, बहुत सारी है, बहुत सारी है। सिर्फ चेक कर लीजिए अपनी पसंद से, 2-4 लोगों से बात करके, सलाह करके, वो आप कर लीजिए। उसमें ब्रोकरेज अलग अलग होती है सबकी रेट। ये बिना ब्रोकरेज वाला है शायद जीरोधा, जीरोधा में ब्रोकरेज नहीं है, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट ब्रोकर। तो आप कोई भी कहीं ICICI बैंक खोल लीजिए, स्टेट बैंक में खोल लीजिए, लोगों ने स्टेट बैंक से भी कर रखा है। स्टेट बैंक दोनों सर्विस देता है, ब्रोकर वाली भी और डीमेट वाली भी, और बैंक खुद है, तो कहते तीनों एक ही जगह हो जाएगा। वो थोड़ा कम, ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा है उसका, मामूली सा, तो सिक्योरिटी अच्छी है। तो आप वहां पर वो आप सिल्वर और गोल्ड दोनों खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, और छोटे छोटे यूनिट में मिल जाता है। कम से कम लीजिए आप, जैसे आज उसका 90 रुपये भाव था 1 यूनिट का सिल्वर का, आप 1 यूनिट ले लो 90 रुपये का। 10 लोगे आप 900 लगेंगे, 1000 लोगे 9000 लगेंगे, 1000 लोगे 90,000 लगेंगे, जितना मर्जी ले लीजिए। न तोलना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बटन दबाना, ओके किया, काम खत्म। बहुत ही मिनिमम कमीशन लगती है ब्रोकरेज, उसमें सब कुछ शामिल होता है, आपको कुछ अलग अलग नहीं करना, बहुत ही कम है, 5 पैसे 10 पैसे ऐसा लगता है, वेरी नॉमिनल। और वो जो मैंने बताया जीरोधा बताया है, उसके अंदर जीरो कमीशन है, तो आप वो ले सकते हैं। ये भी ऑनलाइन है? हाँ जी, ऑनलाइन। क्या बोलते हैं सर इसको? किसको? सिल्वर और गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिल्वर में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हाँ दोनों। जीरोधा पे अवेलेबल है सर? हाँ जी, जीरोधा पे अवेलेबल है, सब ब्रोकरेज हाउस पे अवेलेबल है। स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कहीं भी करो आप। इसका क्या फायदा है कि फिजिकल गोल्ड के अंदर वो लगता था GST बाहर से लेने पर, ठीक है, एक मारने पीटने का, चोरी का डर रहता है, देखा होगा आपने। इसमें कोई डर नहीं, कोई खतरा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं,
इसमें लिया, इसमें बंद, कैश लेस, पेपर लेस, पब्लिसिटी लेस। अब आप जेवर खरीदने जाएंगे, दुकानदार को पता लगेगा, वाइफ को पता लगेगा, सब यू डोंट वांट टू टेल हिम और हर, तो कैसे करोगे आप? इसमें कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता लगा, ऐसे बच्चों को नहीं पता लगेगा, किसी को नहीं पता, या आपको पता है या आपके बैंकर को पता है। तो मैं कहता हूं कुछ पैसा आपको इनमें डालना चाहिए, ठीक है। बैंक के अंदर एक पीपीएफ जरूर खोलना चाहिए आपको। मेरा एडवाइस होगा, सब सुन लिए, पीपीएफ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पीपीएफ को काफी लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर 500 रुपए से खुलता है पीपीएफ। करेक्ट सर, करेक्ट। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में बोलिए पीपीएफ खोल दो मेरा। आपको एक फोटो लेके जाना है, एक आधार कार्ड और 500 रुपए। अगर वो भी अकाउंट में वहीं से ट्रांसफर कर दो, आपको ट्रांसफर स्लिप साइन कर दो, अकाउंट खुल जाएगा आपका। 7.2% 1% ब्याज मिलता है, 7% से ऊपर ब्याज है, टैक्स फ्री ब्याज है। जब मिलता है तब भी टैक्स नहीं लगता, जब क्रेडिट होता तब भी टैक्स नहीं लगता, जब पैसे जमा कराओगे एटीसी में रिबेट है इनकम टैक्स की, जब पैसा वापस मिलेगा तो भी टैक्स फ्री है। मतलब विन विन सिचुएशन, आम के आम गुठलियों के दाम। मैं आपको बताऊं, अगर विजय माल्या ने पीपी अकाउंट में पैसा रखा होता उसकी कुड़की नहीं होती। ये भी सुन लीजिए, कोर्ट कैन नॉट जब्त, कोर्ट पीपीएफ की कुड़की नहीं कर सकती। तो एक सेफ्टी तो है ना, भगवान न करे किसी का दिवाला पिटे, ये सेफ्टी है ना। और करोड़पति होकर निकलते हैं लोग पीपीएफ में, करोड़पति होकर। घोटाला भी किया तब भी वो ना, कितने जानकारी वाली बात पूछी है, मतलब घोटाले में इंटरेस्टेड है। सर पीपीएफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है सर? 7.1%। ओके, ये थोड़ा बदलता रहता है, तो फाइनल रेट वहीं से चेक कीजिए बैंक की साइट से। जी जी जी। हाँ जी, वन बाय वन। हाँ जी मैडम, एक मिनट। हाँ, महीने कितना तक अमाउंट भर सकते हैं सर? क्या जरा यार मुझे बताओ, क्या बोला, कितना भरना चाहती है मैडम? हाँ यस सर। आप कितना देना चाहती है उसमें? No, no, normally because there is a ceiling for PF, no sir, in government organizations. ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये इसमें कोई भी पब्लिक खोल सकता है इसको। अच्छा, ओके सर। ये सब पब्लिक के लिए है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है पीपीएफ के लिए। नौकरी करना जरूरी नहीं है, शादी करना भी जरूरी नहीं है, बाल कटिंग कराना भी जरूरी नहीं है। इसको मैंने इसलिए बोल दिया कि कभी कभी दाढ़ी वाले को नहीं देते क्या, सबको मिलता है पीपीएफ। उम्र की कोई सीमा नहीं है, कहना है ना उम्र की कोई सीमा, मतलब प्यार का बंधन है। मैक्सिमम सीलिंग इन ईयर तो है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। सर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जीपीएफ स्कीम में है, हाँ वो भी खोल सकता है, वो 1.5 लाख रुपए जमा करा सकता है इसके अंदर अलग से। और बोलिए सर, ये सिल्वर डायरेक्ट, सर ये सिल्वर डायरेक्ट नहीं है सर, ये सिल्वर डायरेक्ट नहीं है। सिल्वर, ई सिल्वर एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। वहाँ गोल्ड ऐसे ही, जैसे गोल्ड ईटीएफ है ऐसे ही सिल्वर ईटीएफ भी है। उसके आगे कंपनी का नाम लगा हुआ सर। कोई बात नहीं, कौन सी कंपनी बताओ? जैसे एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है, टाटा गोल्ड ईटीएफ है। हाँ, कोई ले लो आप, किसी का भी ले लो, जिसका पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक ही चीज सर, वो है ना, ये तो सर्फ साबुन है, कहीं से ले लो, कोलगेट, इट्स लाइक कोलगेट, किसी भी ले लो। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। हाँ जी, किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का ले लो आप गोल्ड ईटीएफ। थैंक यू सर। हाँ जी भैया, एक लेक्चर में हूँ, 10 मिनट में खत्म करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। यस जी, ये क्लियर हो गया। पीपीएफ का सवाल क्लियर करता हूँ। कितने, गवर्नमेंट की नौकरी जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली रिक्वायर्ड इज आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और 500 रुपए। उम्र पूछना चाहेंगे कितने, कम से कम कितनी उम्र, कितने ज्यादा कितनी उम्र पूछेंगे कोई? हेलो एनीबॉडी? हाँ जी, 18 years. नो, माइनर कैन ओपन अकाउंट। अच्छा,
मैंने अपनी बेटी का अकाउंट एक दिन की थी तभी खोल दिया था, when she was 1 day old। बस वो लेट इसलिए किया एक दिन बाद, क्योंकि वो हुई थी 4:15 बजे। उन दिनों बैंक 2 बजे बंद हो जाते थे। अभी बैंक आजकल 4 बजे है ना, वो 88 के अंदर हुई थी, तो 88 में बैंक 2 बजे बंद हो जाते थे, तो मुझे जाके खोलना पड़ा। तो आप खोल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप आपके घर में बच्चों के अकाउंट नहीं है, 500 रुपये से खोल दीजिए। 500 रुपये तो बड़ी चीज नहीं है, खोल के छोड़ दीजिए। कंटिन्यू करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कराएं, बस कंटिन्यू करने के लिए 500 रुपये जमा कराएं। और कुछ नहीं करना। आपने एक पासबुक मिलेगी, पासबुक रखिए, नहीं तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट मिलता है, उसमें सब डिटेल आती है। कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप रिजीम कौन सा लो, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम कोई भी लीजिए, पीपीएफ बिल्कुल फ्री है। हाँ जी, बताएं पीपीएफ के बारे में, जरा हाथ खड़ा करें, कौन कौन पीपीएफ खोलेंगे मेरा भाषण सुनने के बाद। और मेरा डिस्क्लोजर है, आई हैव नो कनेक्शन विद द गवर्नमेंट। मेरा कोई पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, पीपीएफ कोई संबंध नहीं है। नो कमीशन विल बी कमिंग टू मी। हाँ, मुझे नहीं आ रही, आज इनको भी नहीं आ रही, चिंता मत करो। यस, पीपीएफ कोई और जानना चाहेगा पीपीएफ के बारे में? हाँ, 5 साल बाद विड्रॉ कर सकते हो, हर साल। आफ्टर 5 years एवरी ईयर यू कैन विड्रॉ। हाँ, लोन भी ले सकते हैं, बिल्कुल। 5 साल बाद तो बिना लोन के ले सकते हो आप, फाइनल विड्रॉल, नॉन रिफंडेबल लोन। और बोलिए, अच्छा सवाल पूछिए, सवाल पूछेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। लेक्चर से आई है, मुझे लेक्चर सुनना भी पसंद नहीं होता। बट सर, ये अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, 6% इन्फ्लेशन इन ईयर, हाँ, तो फिर उसमें इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको इससे तो ऑल्टरनेटिव बताओ मुझे, इनका तो उनसे पूछो जो बता रहे थे शेयर मार्केट वाले। हाँ सर, उनका डूब गया पैसा 30%। सर आप उनसे पूछेंगे अगर लॉन्ग टर्म में क्या होगा तो नहीं डूबा होगा। ही इज स्माइलिंग। कौन? वो सर, उनका दिल जानता है, स्माइल तो ये पब्लिक के ऊपर है, वरना कोई स्माइल नहीं है। हाँ, उनको मत सताओ, आप मत दुखी करो। बट सर यही क्वेश्चन है कि अगर 6% इन्फ्लेशन है, वो कहते हैं वो दर्द क्या है दिल में जो मुस्कुरा रहे हो। 1% से जी, रिटर्न कितना? आप ये इन्फ्लेशन की बातें मत करो, सेविंग करो। इन्फ्लेशन की बात तो करनी तो फिर आप तरीका बताओ ना दूसरा। मैं कह रहा हूँ, मैंने इन्फ्लेशन का तरीका बताया, आपने सुना ध्यान से। मैंने कहा गोल्ड में भी लगाओ, सिल्वर में भी लगाओ, जहां की रिटर्न बहुत हाई है, डाइवर्सिफाई। सर ये जो जैसा आप कह रहे हैं, मकान में लगाना चाहिए ऐसा, या किराए पे रहना चाहिए? दोबारा, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। अगर आपका मकान मालिक अंधा हो, सुनता नहीं हो, मूव नहीं करता हो, तो मकान किराए पे लेके रहो। अगर ये गारंटी हो कि मकान से नहीं निकालेगा, किराया नहीं बढ़ाएगा, तो किराए से बढ़िया कोई मकान नहीं है। 2 गारंटी कंडीशन अप्लाई, कि किराया नहीं बढ़ाएगा और बाहर नहीं निकालेगा। बाहर ना निकालने का तो चल सकता है, हाँ, लेकिन किराया ना बढ़ाए तो किराया भाई कोई 2-4 रुपए बढ़ा ले, 500 रुपए बढ़ा ले, तो जो एग्रीमेंट होगा उस हाँ, हिसाब से बढ़ाएगा। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब फाइनेंशियल, देखो, अगर आपको मकान ताबे जिंदगी गारंटी देता हो, क्या मेरे मकान में रहो, किराया बढ़ाते रहना, मैं कहूँ बिल्कुल मकान मत बनाओ। लेकिन याद रखिए, मकान बनाना मुश्किल है, उसके बाद 6 महीने बाद सस्ता लगने लगता है। मैं कहूँगा जितना भी पैसा आपके हो, थोड़ा पैसा मकान की प्लानिंग के लिए रखें। उसका क्या तरीका है, आप बैंक में अकाउंट रखें, रुपया डिपॉजिट करते रहें, फिर बैंकर के पास आप जाएंगे तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, क्योंकि बैंक का प्रोफाइल देखता है वो, आप रुपये कहाँ डिपॉजिट है, कहाँ। आप कहोगे मेरे वो है, किट्टियां हैं, मेरे इतनी कमेटियां हैं, कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको बैंक से। तो मैं कहूँगा बैंक से लोन लेकर आप मकान तुरंत खरीदें, क्योंकि जो आजकल किराया, अच्छा किराया जो देते हैं 30,000, 40,000 रुपये, 25,000 रुपये, मकान ले लो आप 70 लाख में मकान अच्छा मिल जाता है। एक रीजनेबल फैमिली के लिए 2 बेडरूम सेट 70 लाख के अंदर अच्छा मिल जाता है आराम से। थोड़ा दिल्ली से हटके जाओ, नोएडा में, एनसीआर में जाओ, सोनीपत में जाओ, फरीदाबाद जाओ, मानेसर जाओ, गुड़गांव जाओ, 70-80 हजार रुपये के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अच्छा मकान मिल जाता है।
एक बार ले लो फिर बदलते रहो। नहीं, लेकिन सर उसमें एक हाँ ये भी जी तो है कि जी मान लीजिए कि व्हेन वी प्लान फॉर द हाउस परचेज, हाँ तो प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं, जी तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे वर्क प्लेस से कितना डिस्टेंस है। जी। मतलब आपने कह दिया कि ठीक है, पहले देख लो ना, पहले देख लो सब बातें। नहीं नहीं, मान हाँ लीजिए कि भाई दोज हु आर वर्किंग इन नॉर्थ दिल्ली, हाँ ठीक है, अब मैं नॉर्थ दिल्ली में, मुझे तो मकान मिलेगा ही नहीं। अब मैं सोचूंगा फरीदाबाद या हाँ गुड़गांव जाके कहीं हाँ और वहां से रोज कम्यूट करूँ, हाँ तो हाँ। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, मकान ले लो, यहाँ किराए पे रहो। वैसे एक अवेलेबल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए ये बड़ा, मेरे पास तो ऐसे लोग हैं, मैं तो 45 साल 35 किलोमीटर गया हूँ दिल्ली में नौकरी करने के लिए। आप बताएं मुझे क्या एडवाइस करेंगे आप? नहीं, मैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से। मैं तो कहूंगा मकान जहां मिलता है ले लो, बाद में चेंज और करते जाना। इनका भाई साहब का जवाब मिल जाएगा, मकान बुक होते ही पैसा आ जाना शुरू हो जाएगा। और जो किराए की किस्त है उसमें कुछ और पैसे मिला दोगे तो मकान ही आपका हो जाएगा। आपने कोई मकान ले लीजिए किराए पर, उसमें खरीद लीजिए मकान लोन लेके, उसकी इंस्टॉलमेंट उतनी ही बनती है जनरली जितना आपका किराया होता है। ये तो है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि गहना वहना बेचिए, मकान ले लो। अगर पैसे नहीं है तो मकान में पैसे इन्वेस्ट करो अर्ली। दूरी को छोड़ दो, अभी थोड़ा दूर ले लो, क्या हो गया? आना जाना आसान है आजकल, इतनी मेट्रो चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लोग आते हैं रोज रोज। आजकल लोग मेरठ से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, मानेसर से आते हैं, पानीपत से आते हैं। ये तो लोग मेरे पास है, करनाल से आने वाले हैं मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक लड़की मुझे मिली थी मोतियान कॉलेज में, वो डेली सी कम से कम करनाल। तो मकान की प्लानिंग कीजिए आप। फाइनेंस में मेरा ये एरिया है बताने का। तो आप एक ये कर सकते हैं। मकान के बारे में कोई बात पूछना चाहें, यू आर वेलकम। पीपीएफ के बारे में कोई सवाल है आपका नया? एक पीपी से मिलती स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। यस सर। तो जिनके घर में पड़ोस में जानकारी में कोई लड़की हो 10 साल से छोटी, उसके माँ बाप को सर्च करो आप, अगर आपके यहाँ नहीं हो तो। दोनों ले सकते हैं, हाँ लड़की के लिए दोनों ले सकते हैं, लड़के के लिए खाली पीपीओ ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में नहीं उसमें ज्यादा है, 1% ज्यादा है, 8% है वो। सुकन्या में ज्यादा है। सुकन्या में ज्यादा है। तो सुकन्या की लड़की हो तो उसकी 2 अकाउंट खोलो, एक पीपीओ खोलो, एक ये खोल दो। लेकिन अभी पीपीएफ माइनर के लिए बंद हो गया है, मैं जानकारी दे दूं आप सबको। माइनर के पीपीएफ खोलने पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप खोलिए वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य, नोट कर लीजिए, एनपीएस वात्सल्य। ये बिल्कुल आपकी तरह जो एनपीएस है वही, यही अभी 17 सितंबर से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बच्चों के लिए खोल दीजिए, पैदा होते ही खोल दो। 60 साल के लिए, पीपीएफ 15 साल के लिए, एनपीएस तो वही वाली है ना आपकी वाली, 60 साल के मिलेंगे बस। अच्छा रहेगा ना, अपने को जमा कर दिए, वो चढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, और बोलिए, सवाल पूछिए कोई। फाइनेंस पर कोई सवाल आपका क्वेरी हो जो मैंने नहीं भी रेज किया तो आप रेज कीजिए। हाँ जी जी, आगे आ जाए। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हमने लोन ले लिया, हाँ और हम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, जैसे ये मकान में ई गोल्ड में और ई सिल्वर में। नहीं, उसके लिए लोन नहीं मिलता बैंक से। नहीं, जैसे हमने पर्सनल लोन ले लिया, हाँ हाँ, वो कर सकते हो वो आप। लेके हाँ तो बिल्कुल, बेटर है, बेटर है। बेटर है। हाँ बेटर, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, उधार लेके इन्वेस्ट मत कीजिए मकान को छोड़कर। लिसन अगेन, न म्यूचुअल में इन्वेस्ट करें, न गोल्ड में इन्वेस्ट करें, न सिल्वर में। उधार लेकर इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मकान में तो मैंने इसलिए कहा उधार ले लो कि मकान आपका परमानेंट एसेट बन जाएगी, रहने के लिए है, इसलिए उतारते जाओ। यस यस, और पूछिए सवाल। सर पीपीएफ गोल्ड से पैसा अगर इमरजेंसी में चाहिए तो इमरजेंसी में नहीं है, ये 2 दिन में मिल जाता है, 2 वर्किंग डेज में। और बोलिए, बस आप सेल का बटन दबाओ, 48 घंटे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे अपने आप। अभी लगा दो सारा। सर तो ये बेटा पानी के लिए बोलो, पानी और लाएगा। हाँ, कौन है तुम्हारा अरेंजमेंट वाला, कौन है यार? कोई नहीं है, तुम कौन देख रहा है? बुलाओ मीनाक्षी को, बोलो।
हाँ जी, यस प्लीज, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस जो मैंने कवर नहीं किया हो, आप पूछना चाहते हो। अब तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाएगा अगले साल से। 12 lakhs टैक्स फ्री। यस प्लीज। और सैलरी वालों का तो 1275 है, 1275। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड वालों को फायदा नहीं है। म्यूचुअल फंड वालों को रिबेट नहीं मिलेगा 12 लाख वाला। यस सर। उनको 3-4 लाख मिलेगा खाली, तो ध्यान रखिएगा ये बात। आज यस पूछिए। म्यूचुअल फंड में 12.5% टैक्स है एक साल बाद, और एक साल से पहले आप बेचेंगे तो 20% टैक्स है। इसलिए बता दूं पहले। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? कोई टैक्स नहीं है ना किस पर? पीपीएफ लोड अगर हम वो करते हैं वो तो बेच रहे हैं आप, बेच रहे ले रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं है। पर म्यूचुअल फंड उसके प्रॉफिट पर टैक्स है। हाँ, प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, लॉस हुआ तो कुछ नहीं कहेगी। वो तो नॉर्मल शेयर ट्रांजेक्शन की तरह है। और बताएं Sir, sir, on FDs, interest accrued will be given tax, no, sir? On fixed yes, deposit. yes. So, is it a similar case with the PPF also? No, PPF PPF or accrued interest is tax free. In PPF accrued interest is tax free. even in the e-silver and e-gold? उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। अच्छा, only amount will be deposited there. Only difference between sale price and purchase price will be your profit. No interest. Okay. Very good. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। Okay, thank you, sir. Yes, please. आज फायदा उठा लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और क्वेश्चन पूछिए। सर और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? कुछ भी पूछिए आप। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बताइए। गवर्नमेंट बॉन्ड में आप लगाइए, उसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, सिक्योरिटी होती है और टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड का जो भी ब्याज मिलता है, और उसमें सिक्योरिटी एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में खरीदते हैं। आजकल आरबीआई ने खुला कर दिया, आप खरीद सकते हैं आरबीआई से। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स वो आजकल बंद हो गए, चल नहीं रहे। अगर मिले तो जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है वो, बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आए तो ले लीजिए, आप लीजिए, गवर्नमेंट देती है, 2 महीने के लिए खुलता है वो। आप देखो ऐड वगैरह आता रहता ऐड आता रहता है। नहीं तो आप बैंक मैनेजर को बोल के रखो, वो आपको फोन करेगा। बैंक अपने बैंक मैनेजर को बोल के रखिए कि मुझे क्या खरीदना है, गोल्ड बॉन्ड, वो आपको फोन करेगा, पक्का प्रॉमिस है मेरा। चाहे अपनी वाइफ को ना करे, आपको जरूर करेगा, वो कमीशन मिलता है उनको, इसलिए बोल रहा हूँ। और वो ऑनलाइन लेंगे तो उसमें वो जीएसटी भी नहीं लगेगा। और बताएं सर। 5 साल बाद आप उसे कैश कराएंगे, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। सर सर जो हमारा हमारा जो हमारा कटता है जीपीएफ ना सर। हाँ। हमारा जीपीएफ कटता है, तो अगर हम ये पीपीएफ में हम ये कंट्रीब्यूशन करते हैं तो जो जो टैक्स की जो छूट है कब तक कितनी मिलेगी सर? 1.5 लाख मिलेगी, ज्यादा मिलेगी? 1.5 लाख, दोनों को मिला के 1.5 लाख है। लेकिन आजकल उस छूट को मत दीजिए टीसी को, आजकल न्यू रिजीम में टैक्स भरिए आप। अब ये टैक्स को भूल जाए, टैक्स रिबेट भूल जाए आप। गवर्नमेंट ने 12 लाख कर दिया है, क्या करोगे टैक्स रिबेट का? सभी एम्प्लॉयज को मेरा रिक्वेस्ट है, यू गो फॉर न्यू रिजीम। डिडक्शन का फ्यूचर है जी। एनपीएस सर। हाँ, एनपीएस में कीजिए। Sir, आपको even the yes, yes. sir, after retirement also they can continue with the PPF, sir. Yes, you can continue. You can continue. Okay. Till that, one can continue. Okay. कोई मैच्योरिटी नहीं है वहां पर। और बताओ। अगर किसी का होम लोन चल रहा है तो हाँ। न्यू टैक्स रेजिम लेना चाहिए या ओल्ड? अब डिपेंड करता है कि उसका ब्याज कितना बनता है। अगर 10 लाख रुपए ब्याज बनता है तो उसे वो लेना चाहिए, ओल्ड रिजीम।
क्योंकि 12 लाख का टैक्स फ्री हो गया ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कुछ भी होम लोन से। 2 लाख रुपए में क्या फर्क पड़ेगा? और 2 लाख तो मिलेगा ही आपको होम लोन। होम लोन में 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उसका न्यू रिजीम से कोई कनेक्शन नहीं है। और बोलिए। यस प्लीज। बोले आपने जो बोला है, हाँ मान लीजिए किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है, हाँ और वो न्यू रिजीम ऑप्ट करता है, हाँ तो क्या वहां भी उसको एडमिशन मिलेगी? हाँ, 2 लाख रुपए तक की ब्याज की। अगर उसे अपने मकान बनाने के, अपने रहने के लिए बनाया और मकान बन चुका है और वो ब्याज दे रहा है, तो जो ब्याज दे रहा है 2 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है, घट जाएगा। न्यू रिजिम में कहाँ फ्री है सर? 5 मिनट। 24 में, And सेक्शन new 24 regime में में भी मिलेगा। 24 is it available under new regime? यस। It's right out sir. डाउट मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर किसी नहीं, उसमें नहीं मिलता। अंडर कंस्ट्रक्शन में किसी भी रिजीम में नहीं मिलता। और बोलिए। जब तक मकान बन नहीं जाता, पोजीशन नहीं मिला, तब तक आप ब्याज की रिबेट नहीं ले सकते इनवोइस में। डीडीओ रिपोर्ट नहीं देगा आपको, सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे क्या मकान में रह रहे हैं। और बोलिए, सवाल पूछिए। बस अभी 1 मिनट है बस आपके लिए, 1 मिनट का सवाल पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गए हम, तो 5 मिनट आपको इसलिए दे, इन्होंने 5 मिनट लेट किया है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। हाँ जी। सर न्यू रिजिम में हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की रिबेट नहीं है सर, आप एक बार चेक करें। कौन सी वाली रिबेट भैया? आप सेक्शन बोलो, कौन सेक्शन की रिबेट? 24 की जो सेक्शन की रिबेट मिलती है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की अप टू 2 लाख, न्यू रिजिम में आई थिंक नहीं है सर। नहीं, आप ये एक बार बता आप रहे हैं, ये आप ये को डाउट है या मैं कंफर्म है आपसे आपको? क्रॉस चेक कर रहा हूँ बिकॉज टू द देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, आप इसको चेक कीजिएगा आराम से मीटिंग के बाद। सेक्शन 24, सेक्शन 80C to 80U अलग अलग है, 2 सेक्शन अलग है। 80C to 80U की रिबेट नहीं मिलती है न्यू रिजीम में। सॉरी लेकिन 80C से 80U तक की रिबेट न्यू रिजीम में नहीं मिलती। सर I'm not talking about chapter 6, I'm talking about only section 24 where the self occupied house के लिए अप टू 2 लाख रुपीज की आपको रिबेट मिलती है। न्यू रिजीम में एक बार जितना टू द बेस्ट ऑफ अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर भी आया इनकम टैक्स का, दैट क्लियरली स्टेट की नहीं है, जो भी अब हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू नहीं करती है, जो मैं अपना भी लेटेस्ट, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये था। हो सकता है जो नया सर्कुलर आएगा उसमें चेंज हो गया हो, तो ये तो जरूरी एक और बात है कि जो भी हम जो भी बता रहे हैं, आप कानून से चेक करके ही काम करें, जो भी काम करें। जी जी ये तो क्लियर है बिल्कुल। जी चलिए ठीक है सर, नो इशू, एक बार क्रॉस चेक। हाँ, क्रॉस चेक करके ही काम करें। वैसे भी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, बाकायदा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक करके ही करें, क्योंकि फ्री सर्विस होती है ना, तो कोई आरटीआई लागू नहीं होती इस पर। ये बता दूं आपको, फ्री सर्विस में आप कहीं नहीं जा सकते। फ्री वो जाले से दवाई लेके आते हैं ना, उसमें कोई मर जाए तो क्लेम नहीं मिलता कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में। ये भी कानून की दुर्भाग्य है, ये होना चाहिए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो बातें आपको बताई गई हैं, सब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर चेक करके ही करें। खाता खोलें, किसी भी ब्रोकर से खोल सकते हैं आप, बस ये ध्यान रखें वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। और अपना पासवर्ड संभाल के रखें, अपना डीमेट अकाउंट किसी को नहीं बताएं। ये सब प्रिकॉशन जो होती है डिजिटल की, वो ध्यान में रखें। नहीं है तो फिजिकली करें, डिजिटल नहीं आता हो तो। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम आरपी तुलसियान है। आप कभी भी इनके थ्रू नंबर ले लीजिए, आप नंबर पे मैसेज करके भी सवाल पूछ सकते हैं। Okay, sir. Thank you very much. सो नाइस ऑफ यू, आप अपने समय निकाला। थैंक यू सर, ठीक, आपने अपना वैल्यूएबल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
ऑनलाइन पार्टिसिपेंट वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, सर का पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था तो इसलिए सर जल्दी निकल गए। सर का एक्चुअली जो टॉपिक था फाइनेंशियल लिटरेसी, तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, तो वी शुड अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द मार्केट। हमें पता होना चाहिए भाई कहाँ पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो टैक्स फ्री है या टैक्स फ्री नहीं है, किस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, किस में हमें टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि बीइंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, हमें सबसे पहले यही रहता है कि वेदर वी आर गेटिंग एनी एग्जम्पशन इन आवर टैक्स और नॉट। सबसे पहली चीज हमारी यही होती है। तो टैक्स जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल लिटरेसी तो ठीक है कि वंस वी हैव द मनी देन वी विल प्लान फॉर द इन्वेस्टमेंट, और वंस वी थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट देन वी विल बी अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल जो हमारी लिटरेसी है वो उसी को इंडिकेट करती है कि हम कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी बताया कि एग्जाम्पल सर ले थे म्यूचुअल फंड का, ठीक है, तो ये सबको पता है कि वेयर देयर इज ए रिस्क देयर इज ए प्रॉफिट। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ तो उसका फर्स्ट कंसेप्ट यही होता है कि वेयर देयर इज ए रिस्क देयर इज ए प्रॉफिट। हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। गोल्ड के रेट भी डाउन नहीं होते क्या? गोल्ड के रेट भी एक समय था कि डाउन हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का रेट डाउन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं अभी 5-7 साल 10 साल का एग्जाम्पल लूँ तो गोल्ड के रेट डाउन नहीं हुए, एक्सेस बढ़े हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारा सबसे जो है सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे सर ने बताया, अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूँ तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने ही जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह में किया था और ही अर्न ए हैंडसम रिटर्न फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो आप प्लान करेंगे, और जब प्लान करेंगे तब मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी का कंसेप्ट जनरेट होता है कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हमारे, अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूं तो जनरली क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर ने हमारे को बहुत सारे स्कीम बताए, जैसे कन्या समृद्धि स्कीम बताई उन्होंने, पीपीएफ स्कीम बताया। तो पीपीएफ में जो है हमारा 15+5+5 का कंसेप्ट होता है। हम 15 साल कर सकते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम जो है। जो सर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई, जो 7.25% है, उसके अलावा वो जो है क्वार्टरली एक्यूमुलेट होता है जो आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आप उसका फाइनल पे आउट देखेंगे तो इट इज मोर देन 8%। कि जो आपको 7.5% बनता है वो क्वार्टरली एक्यूमुलेट होता है, जिसको अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो हर 3-3 महीने